A very good afternoon to one and all. KC Society, SS Maniar Law College, and through its intellectual property right cell, IPR cell, we have organized this one-day national webinar, Emerging Trends in Intellectual Property Rights and Cyber Crimes. And for this, today's resource person, Professor Dr. Raman Mittal, Campus Law Center, University of Delhi, and Mr. Deepak Lagad, Senior Police Inspector, Pune District, Maharashtra. And today's president of this program, Dr. Kumar Reddy sir, Principal, SS Maniar Law College, and Associate Dean, Faculty of Law, Kaviyatri Bainabai Chaudhary, Maharashtra University, Jalgaon, and all the participants. As due to this lockdown, that we are meeting on this online platform. And regarding this today's topic, intellectual property rights as well as the cyber crimes. These particular the terms are becoming a part of the life, and we thought that we should conduct some webinar on this particular issue through our intellectual property right cell. So I request Dr. B. O. Kumar Reddy sir, Principal, deliver the welcome address. Reddy sir. Yes. Good evening to all. Today, our KCE Society's SS Maniar Law College organizing this national webinar through Intellectual Property Cell on the title Emerging Trends in Intellectual Property Rights and Cyber Crimes. Friends, during the course of pandemic, we come across several things relating to the significance of use of technology for communication. And this intellectual contributions, directly or indirectly, which will give sustainability of life. When such correlation is there under intellectual property rights, cyber also a part, information technology also a part, and it is communication is also one part. This entire system, though it is a modern and it has given more importance to the entire globe, particularly during this pandemic. Frontline warriors, so today they got more full importance for the medical fraternity, and at the same time the
Excuse me, Reddy sir. Sir, your mic is muted. Please unmute. Ji. Thank you. Thank you. Hello, just now it happened. Oh, अभी open. जस्ट नाउ हो चुका है, आप कंटिन्यू करो सर. So these three fraternities, which are basically depending on the technology, cyber systems, one way or the other. So for protecting right to health, so which may give effect for life, right to life, protecting by medical, and the person who affected, his communications shall be given through this cyber information technology or whatever you may call. Today, the mobile phones which have been given more protection for a person who has been suffering with any health problem from corona here. When these pandemic issues are going on simultaneously with relating to legal issues, those are nothing but so cyber crimes and the other type of crimes, related crimes, which has been so enormously so sustaining like anything. There is no control at all. In such and such circumstances, myself and my faculty has decided to organize a national webinar on this title through IPR cell, so that for creating awareness, for getting his background, so we have invited Professor Dr. Raman Mittal, Professor, Campus Law Center, Delhi University, New Delhi. When we have contacted him, we are aware that the horrible situation was there in Delhi. So in spite of such type of situations, Mittal sir has given consent through email, and he has been continuously cooperating whatever my faculty members have been representing with him relating to conducting of this program. So he has timely given response, and today you yourself have been witnessing that he has taken part within time, and so I welcome Dr. Professor Raman Mittal sir on behalf of KCE Society's SS Maniar Law College. And he is going to address the students. Just now I said jurisprudence of intellectual property rights. It is more important, it is very, very necessary in these days, the background of intellectual property and various so innovative things, who is going to contribute in what way, and each and every new techno-legal, whatever it may be, these things have been incorporated under intellectual property itself. Hence, he is going to address on that area. And the another area, and the second guest speaker, Mr. Deepak Lagar, who is a senior police officer from Pune. I can proudly say that he was alumni of SS Maniar Law College. He was completed LLM from my institution. When he was working in Jalgaon, whenever he was not having any duty or he may be having free time, he was continuously spending time in SS Maniar Law College library only. So though the person nowadays, we are seeing that in the police department, how the people are and how their style of working and functioning. Whereas, so this Mr. Deepak Lagar sir, who was attached to SS Maniar Law College. So, some time back,
through transfer, he went to Pune or somewhere he's working. So when we have contacted him, he has given consent and he is with us today. And he is going to address on the area of emerging trends in cyber law. So he is having ample knowledge with relation to cyber crimes, and he worked in that area, practical issues he has identified. So friends, here I would like to say, so this intellectual property rights and cyber crimes, all these things are most necessary. Why? Because nowadays, so everything is taking through virtual. So for that, if we want to say, if we want to compare it, we can say that money is a small coin, health is a big coin, love is a so lucky coin, relationship is a sweet coin, friendship is a gold coin. Whereas intellectual property rights and cyber law is a global coin today. So with these few words, so I don't want to enlighten on the subject. For the purpose of organizing this webinar, the IQAC coordinator, Professor Dr. Deepak Sirsagar sir, who has initially initiated, and Intellectual Property Rights Cell coordinator, Professor Dr. Vijeta Singh, who has taken serious steps, and she herself has initiated and suggested so resource persons as well. According to her, we are making so each and every arrangements. So she has taken more initiation, and so our technological support, and particularly for non-law integrated course for non-law, Dr. Dumale is the person so who is dealing with computers language lab in our so technical activities. Actually, Dumale sir was the so technical supporter and he is the coordinator, particularly for the purpose of taking steps for arrangement of resource persons. So in this intellectual property cell, Dr. Vijeta has taken serious steps. And the other faculty members, different coordinators, they have contributed their support. Dr. Rekha Poja, Dr. Mahajan, and librarian Amita Varade. And today, not only my own faculty members in my university, from different law colleges, different faculty members who have taken part. So their heads, particularly we can say that Professor Dr. N.D. Chaudhary sir from NTVS Law College, Nandurbar, and Professor Dr. Y.V. Bhairam from Baba Saheb Ambedkar Law College, Dhule, and Professor Dr. Shahnaz, in charge principal of Akalkuwa Law College, and the other colleges principals and their faculty members also have taken part in this webinar. I welcome all the faculty members, students, and the persons. And at this instance, I would like to cite the students who are recently passed out, would have elevated as an advocates, Dr. Niranjan Dakhe, and from University Distance Education Department, Professor Dr. Japtop Madam,
including her daughter, they have taken and they have given support for the purpose of organizing. Why these many people support are necessary? If you observe, you might have seen the situation outside in the newspapers here. So whether the spread is there or not, but threat is there. Due to threat, so only through technology only each and everybody has making success of programs. With these few words, I will stop here. I once again welcome all the faculty members and the participants of this program. Thank you very much. Thank you, sir. Thanks a lot, sir, for your. Now I ask Dr. Vijeta Singh, Madam, that to take over this webinar. Dr. Vijeta. Thank you, Reddy sir. Thank you, Sagar sir. A very good afternoon, one and all. Respected Chief Guest or Chief Resource Person of today's program, Professor Dr. Raman Mittal sir. Respected Resource Person, Mr. Deepak Lagarde. Respected my own principal and other principals of Law College, faculty members, and my dear brother and sister. SS Mania Law College is glad and having a great pleasure to invite you and gathered you all in this August gathering and an opportunity. We are getting an opportunity to introduce a renowned person on the topic of intellectual property right. Friends, I'm really feeling pleasure and having great enthusiasm to introduce our today's speaker to start before the session. Dear friends, last year in one international webinar, I heard Professor Mittal. And since then, I was thinking when I would get an opportunity to call that identity, to call that personality. And that day came today. So we are very fortunate, and you will also feel very happy and glad after listening his words of wisdom. So before moving to listen Professor Mittal, it is my primary duty to introduce his contributions and caliber. Dear friends, Professor Raman Mittal is currently professor in charge of Campus Center, Faculty of Law, University of Delhi. Prior to that, he was the head and Dean Faculty of Law, University of Delhi. Professor Mittal joined University of Delhi in the year 2005 and has been full professor since the year 2011. Prior to that, Professor Mittal worked at the Indian Law Institute, New Delhi. He also served in the Winthrop, Simons, Putnam and Roberts law firm in the USA. Sir holds LLM degree from the Sir has acquired LLM degree with gold medal with flying colors. He also succeeded in his PhD from the Punjab University. Together he did MSS from the International Space University, France. Professor Mittal did his postdoctoral from the Max Planck Institute of Innovation and Competition, Munich. Now, friends, you will be more glad to hear his editorial and contribution in the area of script. Professor Mittal has published extensively in a national and international journal and has also authored and edited several books. His research work have been appeared in the Journal of Indian Law Institute, Journal of Consumer Policy, Sprengel, Journal of Intellectual Property Right, Les Novelis, Licensing Executive Society International, Space Policy, Uniform Law Review, IP Tech Law Journal, Oxford University Press, Springer, Edward, Elgar, Cloer, Academic Publisher, Rautegels, Welk, CH, Beck, and Satyam Law International, among others. Professor Mittal has edited the Journal of Indian Law Institute, Delhi Law Review Journal,
Campus Law Center. His research interest includes intellectual property law, contract law, licensing, banking, insurance, and international laws. He speaks widely on the issue related to these areas in India and abroad. Professor Mittal has also visited the various legal institutions in the capacity of academic visitor across the world. The prominent Big Max Planck Institute of Innovation and Competition, Munich, University of Washington, Steel, University of Tokyo, University of Seoul, International Institute of Human Rights, Stanford, World Intellectual Property Organization, and World Trade Organization. I'm glad to tell some more things about him. Professor Mittal has advised the Ministry of Human Resource Development, Government of India. Also, he headed the treaty negotiation and was a member of Indian delegation to the World Intellectual Property Organization to negotiate international treaties in the area of copyright. Professor Mittal was a member of drafting committee that was tasked with the drafting of Indian Copyrights Bill 2013. Friends, this is a very small introduction of this high quality entity, Professor Raman Mittal sir. Without wasting much of time, I would request, I would appeal, I would sincerely invite Professor Raman Mittal sir to express his words of wisdom. Sir, we welcome you and please you start your presentation. Dear friends, it is my humble request if you have any query, question, you can put in the chat box, and after the presentation, our resource person will satisfy your question and queries. Simultaneously, afterward, you can ask directly also. Mittal sir, over to you. Please take over the mic. Thank you very much for the kind introduction. Okay, so let me just share my presentation with you. Okay, is the presentation visible to you? Yes, sir, it's visible. Yes, sir. Okay, Yes, sir. great. All right. So thank you very much for the kind invitation. And I'll be speaking on the jurisprudence of intellectual property rights. And in case you want to ask any questions, so please stop me and you can ask the questions right when it appears in your mind, right? Because in the end, there is always lack of time. Okay. Then I'll be concentrating on the jurisprudence of intellectual property. I'll be talking within its sphere, the origin of intellectual property, its development, scope, and relevance. Okay. So I will start with this question. You see 3 circles on the screen? Do you see these 3 circles on the screen? Yes, sir. Okay. Yes, So one circle is called law, the blue one. The yellow is intellectual property. And the greenish one is property. All right. So I want you to draw these 3 circles in such a manner that the relationship between these 3 distinct legal concepts becomes clear. Okay. How would you draw it? Okay, I'll give you 3 options. So in front of you, there are 3 options. Okay. Your task is to choose one which, according to you, best demonstrates and represents the relationship between law, property, and intellectual property. Which out of these 3? Yes, anybody? I invite you all to do this exercise. Law is blue, intellectual property is yellow, and green is property. 3 circles, you see. And I have given you already 3 models. Okay, which one do you think is the best
to represent the relationship between these three concepts? Would you like to try? Sir, gray one, the middle one. Middle one means 1, 2, and Eight. 3. Second one. Second one on the right side of the screen. Yeah. Okay. Why do you think so? Because it maintains the relationship between both. It is a mediator between both, first and second. Okay. It adjusts to also. Reflection both are looking over there also. Okay, right. Okay, anybody else? Would anybody else like to try? Sir, some of the answer we got on the chat box. Sorry, I didn't hear you. Sir, some of the answers there in chat box. Chat box. Okay, I can't see the chat box. So because I'm in the presentation mode, so I can't see it. Yes, sir. So all you have to do is to speak the answers. Sir, participants are some are saying first one, some are saying third one. Like that answers are there. Okay, right. So which one should we say is right? So it's first one. Why it's first one? Sir, because law is a wider whole in which there is a property, and property can be of different kinds, and one of the property, it can be, intellectual property. So this way, law, then property, and then comes the intellectual property. Right. Okay, good. So now let me, because we are talking about jurisprudence of intellectual property, so let me draw your attention to something which Jeremy Bentham had said, right? What he said in his book on law and morals, he made a statement. The statement is, please listen carefully. Law and property are born together and they die together. Okay. So this is half a sentence. The full sentence is, law and property are born together and they die together. Take away the law and you take away all property. But let's not, it becomes too long. So just focus on the first part. Law and property are born together. Okay. Now, what does it mean? Law and property are born together. What does this mean? So it means if there is a law, there is a right to property as well. Both the right, exist at one and same time. Okay. So rights are attached with the things only, and when there is a thing, then there will be right. So property and law are come together. No, that's okay. They're together, but he says they are born together. What does it mean? It means wherever there is a right, there is a remedy. Mhm. So when we say there is a property, there has to be a law attached to it and vice versa. Okay, all right. So I'll return to this question maybe in a moment, but first let me dispose of this question here, which is on your screen. Which out of these? I gave you 3 models, and your task was just to choose the most appropriate one. See, there would be merits in all these models, okay? But I would go by the first one, okay? Law is the widest concept, and within that is property, and within that is intellectual property. All right. So let's proceed on this premise like this. Law is widest, then property, and then IP. All right. Okay. So now this picture, this is the this was the character of our Earth when we were born on the planet. When we first came on the planet as human beings, we found Earth like this. All right. And we were something like this. Is that right? Now the question is, what was life like that? We have moved a lot from that stage, but what was life like that at that time? So philosophers down the ages, everywhere, every time, they have like ruminated on such questions, such existential questions, right? So Thomas Hobbes, a great English philosopher, what he mentioned was in his book that initially
when man appeared on the planet, his first task was preservation. He wanted to preserve himself. And once he was done with the preservation, he sought pleasure. And once he was done with pleasure, he sought power. So this has been the journey of man, from preservation to pleasure to power. Now the question is, where would intellectual property fit within the scheme of things? The next thing is that Thomas Hobbes himself, he also wrote, at that time when man appeared, life was, he says, isolated, poor, nasty, brutish, and short. When man appeared on the planet, he said, Thomas Hobbes says, that the life at that time was isolated, poor, nasty, brutish, and short. Do you agree with that? Do you agree that life was isolated, poor, nasty, brutish, and short when man first came on the planet? Or you Yes, don't sir. agree? You agree with him? Yes. Okay. So we wanted to change this, right? It was isolated, we know. It was poor. Poor in the sense that we don't have, for example, this computer through which I'm making a presentation, I'm unable to talk to you, was not there. Okay. So in that sense, many of the things which we take for granted were not there. In that sense, it was poor. And then nasty and brutish and short, because if we go back thousands of years, the skeletons that we examine, human skeletons that anthropologists examine, they find that the skeletons at most they age up to 35 or at most 40, because at that stage man starts declining. And once a man is declining, there was no place for that declining man in that kind of condition. On the basis of that, Hobbes says that life was nasty, brutish, short it was, no doubt, and it was nasty and brutish. You examine those skeletons, how those people died. They have all died because of deep wounds inflicted by possibly others in conflicts. So that's how we imagine. We try to analyze and find out the life like that. And now, what have we done till now from that stage? That is the history of our law, and then we will fit in intellectual property within the scheme of things. All right. Now, origin of law. Because we want to talk about the origin of intellectual property, I think it's opportune for us to talk about origin of law. So, what was the first law that we made? But before we approach the first question, I have listed 3 questions here. Before that, we have to come to an understanding. The understanding is, do you all agree that we make our own law? We are the masters of our law? Do you agree to that? No. Why not? We have invested a lot of money in making the parliament. We elect representatives who we send from our constituencies to the parliament. What do? They make law for all of us. So can't we say that we make law for ourselves? So it would fall within the purview of man-made law, but there is a natural law as well, No, but over which you do not have any all the laws that we are concerned with, for example, starting from the Constitution, the Indian Penal Code, or whatever, see, they are all made by us. Yes. Right? So can't we say Yes. that we make our own law? Can't we say that? Do you not agree with that? We can say like these are made through our representatives, like members of parliament. That is one method of making law, through because we elect our representative and their only work is to make laws, right? Yeah. So in a way we are making law, Yes. indirectly, right? So we are the masters of our law. अगर वो अच्छा लॉ नहीं बनाएंगे तो हम बदल देंगे उनको, अगली बार से हम उन्हें नहीं भेजेंगे, ठीक है ना, बनाने हम किसी और को भेजेंगे फिर लॉ बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए, ठीक है ना, तो हम अपना लॉ खुद बनाते हैं. तो अगर हम ये चीज मानते हैं कि हम अपना लॉ खुद बनाते हैं, ठीक है, तो what was the first law that we made?
हमने कभी तो शुरू किया होगा ना लॉ बनाना. What was the first law? Yes, this is a question to you. बताइए. So we can say, like, constitution, it was the very first law after independence, if we consider. No, like, we are not talking about independence. See, independence तो अभी हाल ही में 70 साल पहले हुई है, लेकिन उससे पहले भी कानून तो बनता ही था. ठीक है ना? So forget about independence. We are talking about as human beings. As human beings, what was the first law made by us? Yes, I want you to imagine. So maybe, in term, like, if you are asking us to, it is like, relating to civilization, that, kind of that concept which first came. But it is not as such the law which we see it as today. देखिए ना, अब हम अगर हम अपना लॉ खुद बनाते हैं तो हमने कोई लॉ तो पहले बनाना शुरू किया होगा ना. वो कौन सा लॉ था? Hello. Yeah, please go ahead. I think, sir, it's code of the code of Hammurabi that was invented in 1792. Okay, Is that BC. true? Like we say in that area, we say Hammurabi as the lawgiver. In our context in India, we say sometimes we say Manu is the lawgiver or Hammurabi in that. So in different civilizations, different. लेकिन उनसे पहले भी लॉ तो था. Okay. ठीक है ना? और हैमुराबी का लॉ था, वो तो एक बनाने वाले का नाम हो गया हैमुराबी तो. ठीक है ना? पर कौन सा लॉ उसने कौन सा लॉ बनाया? अब हैमुराबी का लॉ अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे लॉज हैं. तो कौन सा लॉ पहले सबसे पहले कौन सा बना? Sir, in our country, dharma was the first law. Manusmriti was there. No. Dharma is only the container of law. Okay. बट उसमें कौन सा लॉ था पहले? उसमें तो सारे लॉ हैं. धर्म में तो सारे लॉ आ जाते हैं. ऐसे थोड़ी कहते हैं कुछ धार्मिक लॉ है कुछ अधार्मिक लॉ है. सारे ही धार्मिक है. ठीक है ना? तो हमने कौन सा बनाया? आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए एलएलबी में हम बहुत सारे लॉज पढ़ाते हैं ना, 20, 25, 30 लॉ तो पढ़ाते ही हैं. उनमें से देखिए आप कौन सा लॉ सबसे पहले बना होगा? There were customary laws, sir. कस्टमरी लॉ तो बहुत तरह के हो सकते हैं. कस्टम एक मैरिज का भी हो सकता है और So is it- इनहेरिटेंस का भी हो सकता है. ठीक है ना? कस्टम में तो बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश, कस्टम वाज द ओनली सोर्स ऑफ लॉ इन इंडिया. ठीक है ना? तो कस्टम तो इज Right, अ sir. सोर्स ऑफ लॉ, इट्स नॉट अ काइंड ऑफ लॉ. ओके. Right, sir. अब कस्टम में भी हमने कौन सा लॉ पहले बनाया बताइए? कस्टम तो एक लॉ बनने का तरीका हो गया. So something relating to human rights, like. ह्यूमन राइट्स. ओके. अब लॉस तो सारे ही ह्यूमन राइट्स ही होते हैं. ठीक है ना? राइट लॉ की जो प्राइमरी लैंग्वेज है वो राइट एंड रॉन्ग की ही है. ठीक है ना? राइट एंड रॉन्ग इज द बेसिक अल्फाबेट ऑफ लॉ. तो ह्यूमन राइट तो सारे ही हैं. ठीक है ना? तमाम तरह के हैं. ओके, तब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए हम थोड़ा फिलोसोफर्स की हमें हेल्प लेनी पड़ती है. सो दीज क्वेश्चंस, राइट, एज आई मेंशन्ड अर्लियर, that we have been mesmerized by these questions from times immemorial. Okay, so again I would cite Jeremy Bentham, a great philosopher. He was a lawyer but never practiced. He devoted his life to the study of law and wrote many books. And in one of the books on principles of laws
लॉ एंड प्रॉपर्टी आर बॉन्ड टुगेदर। ठीक है, अब इसी स्टेटमेंट पर आप ध्यान दीजिए, लॉ एंड प्रॉपर्टी आर बॉन्ड टुगेदर। अब इसके हिसाब से बेंथम क्या कहते हैं कि कौन सा लॉ पहले बना। जस्ट फोकस ऑन दिस स्टेटमेंट, लॉ एंड प्रॉपर्टी आर बॉन्ड टुगेदर। As per Bentham, definitely property would be first law. Okay, right. So that's what Bentham said. Law and property are bond together. Bond together वो कब होंगे? हमें मालूम है ना, हमने पहले रिलेशनशिप देखी है लॉ एंड प्रॉपर्टी की कैसे बनाई है। प्रॉपर्टी बड़ा सर्कल है और सॉरी, लॉ बड़ा सर्कल है और प्रॉपर्टी छोटा सर्कल है उसके अंदर। हमने यही समझा ना पहले। वी एग्री टू दैट, Yes, राइट? sir. नाउ Yes. एक बड़ा सर्कल है और एक छोटा। लॉ बड़ा सर्कल है, लॉ इज अ वाइडर सर्कल एंड प्रॉपर्टी इज अ स्मॉलर सर्कल विद इन इट। नाउ हाउ इज इट पॉसिबल that both of them were born together? How is it possible? When Bentham says law and property are born together, देखिए सर्कल तो बेंथम नहीं बनाए होंगे, जो एनालिसिस हमने की है वो बेंथम ने भी की है, ठीक है ना? तो हाउ कैन यू से टू डिफरेंट सर्कल्स, एक बड़ा एक छोटा, दे आर बॉर्न टुगेदर? हाउ इज दैट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? No. Is Bentham's analysis agreeable? Or in other words, how can you prove that Bentham is right when he says law and property are bond together? As per Bentham, he has given the concept of subsistence. Can you prove Subsistence, Bentham right? abundance, equality, and security. So all could be protected because of law only. So property and law, security all together means of law. They are bond together. Why did he say they are bond together? Okay, हम इसे ऐसे समझते हैं that Bentham says they were not two circles in the initial days, right? अभी हम ऐसे देखते हैं कि लॉ बड़ा सर्कल और प्रॉपर्टी उसके अंदर छोटा सर्कल, लेकिन उस समय Bentham says there was only one circle, that was property and that was law. लॉ में और कुछ था ही नहीं। अगर लॉ से हम सब कुछ और निकाल दें आज के दिन और सिर्फ प्रॉपर्टी रखें तो एक ही सर्कल है, दो की जरूरत ही नहीं है। वही सर्कल प्रॉपर्टी होगा और वही लॉ होगा, ठीक है? तो बेंथम सेज शुरू में ऐसा ही था, एक ही सर्कल था, वही प्रॉपर्टी था और वही लॉ था। इसका मतलब क्या हुआ? पहला लॉ हमने कौन सा बनाया? प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू बेंथम। और उसके बाद और बहुत से लॉज आए, हमने बनाए, तो प्रॉपर्टी का उस लॉ का सर्कल बढ़ता चला गया, ठीक है? तो प्रॉपर्टी का सर्कल लॉ के अंदर एक छोटा सर्कल रह गया, राइट? दैट्स व्हाट जेरेमी बेंथम meant. So according to him, property was the first law made by man. Okay, so and then he says, उसकी स्टेटमेंट को कंप्लीट कर देते हैं, लॉ एंड प्रॉपर्टी आर बॉन्ड टुगेदर। ये तो हमने एनालाइज कर लिया, ठीक है? लॉ एंड प्रॉपर्टी आर बॉन्ड टुगेदर। सेकंड पार्ट है एंड दे डाई टुगेदर। अब इस पर फोकस करें, एंड दे डाई टुगेदर, ठीक है ना? तो बेंथम ने क्या किया? जीना मरना सब एक ही सेंटेंस में खत्म किया। एंड दे डाई, दे का मतलब लॉ एंड प्रॉपर्टी, एंड दे डाई टुगेदर। अब इसका क्या मतलब हुआ? बॉन्ड टुगेदर तो हमने समझ लिया, डाई टुगेदर का क्या मतलब हुआ? कि अगर प्रॉपर्टी नहीं रहेगी तो फिर लॉ भी नहीं रहेगा। और थोड़ा सोचिए। एंड दे डाई टुगेदर। देखिए, जब अब बॉन्ड टुगेदर की बात थी तो हमने कहा कि प्रॉपर्टी, इसका मतलब है प्रॉपर्टी वाज द फर्स्ट लॉ मेड बाय मैन। अब डाई टुगेदर की बात है तो क्या मतलब होगा इसका? If there will be no property rights and duties and all will not be there, and so fight will be, chaos will be collapse. No need of any chaos and fighting of claiming of right. ओके, तो इसका मतलब हुआ लॉ एंड प्रॉपर्टी आर बॉन्ड टुगेदर। दैट मींस प्रॉपर्टी वाज द फर्स्ट लॉ टू बी मेड बाय मैन। एंड सेकंड स्टेटमेंट, एंड दे डाई टुगेदर, इसका मतलब हुआ दैट प्रॉपर्टी विल बी द लास्ट लॉ टू बी डिसबैंडेड बाय मैन। जो भी चीज, द लॉ ऑफ नेचर, सुप्रीम लॉ डिक्टेटेड बाय नेचर इज
एनीथिंग विच इज बॉर्न मस्ट डाई, ठीक है, जो भी चीज पैदा होती है उसे खत्म होना ही पड़ेगा। अब वो सेम चीज लॉ के साथ भी है, वही प्रिंसिपल लॉ पर भी एप्लीकेबल है। तो हमने अगर एक दिन लॉ बनाया है तो लॉ को हमें खत्म भी करना होगा एक दिन, या अपने आप खत्म होगा वो, ठीक है, वो होगा ही, क्योंकि जो भी चीज पैदा होती है उसे खत्म होना ही पड़ता है, चाहे वो इंसान हो और एनिमल हो या इंस्टीट्यूशन हो या कुछ भी हो या प्रिंसिपल, ठीक है। सो उन्होंने कहा एंड दे डाई टुगेदर, दैट मीन्स property will be the last law to be disbanded by man. That means with this statement he showed the importance, what he felt, the importance of property. इसे सबसे पहले भी हमने लॉ प्रॉपर्टी ही बनाया और सबसे आज तक हमारे पास जो लॉ रहेगा वो प्रॉपर्टी रहेगी. So the relevance, the importance of property in the legal scheme of things is enormous, right? So that's how property is so important, and we have seen intellectual property is latest in the species of property, latest edition we can say. It is extremely important, right? So intellectual property is important, and whatever is applicable for property is applicable for intellectual property. All right, now we say intellectual property is important. Now let me ask you another question. Think big. Today we know that the business is becoming global. What is the biggest, which is the biggest company or business house in the world that you can think of? Let's go big. Please answer this question. What is the biggest business house or biggest company in this world today? So Tesla. Tesla. All right. Very important, very big also. Now, what is the greatest, what is the biggest property of Tesla? It's their copyrights. It is their intellectual property. Okay, they have a lot of technology which they have patents on, etc., right? Okay, think of any other big business house apart from Tesla in a different field. Amazon. Amazon, right? Amazon is a platform to do business. Now, what is the biggest asset of Amazon? What is the biggest asset of Amazon? E-commerce platform. Yes, I would say the biggest asset is their name, their trademark, that is Amazon, right? So again, it is controlled by intellectual property. All right, so wherever we see, whatever we do today, if we want to do business, we need to be careful about intellectual property. So there lies the importance of intellectual property. All right, now let's move on to the second question that you see on your screen. When did we make the first law? So हमने एक तो देख लिया, we have cited Bentham and various other philosophers have also talked about it. So let us agree that Bentham and agree that property was the first law to be made by man. Now the next question is not what, next question is when. ये हमने कब बनाया? कभी तो बनाया होगा ना, हमने पहले एग्री किया है कि हम खुद अपना लॉ बनाते हैं, तो हमने कभी तो बनाया होगा ना ये प्रॉपर्टी लॉ. नाउ द क्वेश्चन इज कि कब बनाया? In the preservation stage of human evolution. वो कब था? Probably in BCs. बीसी तो बहुत बड़ा एरिया हो गया ना, 2000 साल पहले सब बीसी ही था. बीसी में भी कब था, कब बनाया? Maybe so in the beginning of 17th century. उससे पहले लॉ नहीं था क्या? So difficult, it's a difficult question, right? Anyway, we will return to this question a bit later. Now let us focus on the third question. Why did we make the first law? Okay, the first question was what, second is when, and third is why. So let's focus on why. हमने क्यों बनाया लॉ? उसके बिना भी तो काम चल ही रहा था ना हमारा. To avoid crimes. तो क्राइम तो अवॉइड हुए ही नहीं.
So in order to ensure a kind of security, unless and until law is not there, there will be nothing like property right. Mhm. So for the sake of security. For the sake of security, right. और बताइए जी. And to protect ourselves and our properties. देखिए, हाँ ठीक है. और बताइए, why did we make out the first law? चलिए, let's take a proposition. Imagine our life sometime back when there was no law. Okay, जब लॉ था ही नहीं, क्योंकि अगर हम मानते हैं कि हमने लॉ बनाया तो एक तब समय हमने शुरू किया लॉ बनाना, उससे पहले लॉ नहीं था, प्री लॉ स्टेज. नाउ देयर वाज मिस्टर ए इन दैट प्री लॉ स्टेज. ही वाज, वो ऐसा आदमी था जैसा हमने अभी देखा था 2-3 स्लाइड पहले. ठीक है. ही वाज, अब भूख तो उसे भी लगती थी. ही वाज हंग्री. व्हाट ही डिड व्हेन ही वाज हंग्री? ही सॉ अ बर्ड flying low in the sky. He took an aim at the bird, shot the bird down. ठीक है. ए ने क्या किया? बर्ड को मार गिराया with the intention to eat it up. ठीक है. अब बर्ड जब जमीन पर गिर गया, फिर क्या हुआ? What happened then? बता सकते हैं फिर क्या हुआ? Yes, उन्होंने खा लिया होगा. So this is a kind of subsistence, Right was claimed on bird. ओके. नहीं, अभी खाया नहीं है उन्होंने. खाने से पहले क्या हुआ? They claimed right. उससे पहले क्या हुआ? Struggle for existence. There could have been another person who Yes, came and बिल्कुल claimed. ऐसा ही, बिल्कुल that it ऐसा is mine. ऐसा लगता है आप वहीं पर थे उस समय. ठीक है. तो Thank you. बी केम ऑन द सीन. और बी ने क्या किया होगा फिर? बी ने बर्ड को उठा लिया. ठीक है ना. बी पिक्ड अप द बर्ड एंड ए सॉ इट, एंड देन व्हाट हैपेंड? Who has hit at the bird? This question was raised. And Yes. right, who had right over it? ना, राइट और रॉन्ग तो ये लॉ बताएगा ना. लॉ तो था ही नहीं उस समय. ठीक है ना. तो बी ने बर्ड उठा लिया और उसको खाने लगा, लेकिन ए सीन पर आ गया. और फिर क्या हुआ? But the argument there must have ensued been a about fight between who A and B. ठीक है ना. ए एंड बी में फाइट हुई होगी, और जो जीत गया उस फाइट में, बर्ड उसके पास चला गया. माइट वाज राइट. ठीक है ना. तो नेचर का तो यही लॉ है. लेकिन वी वर नॉट हैप्पी. वी वर नॉट हैप्पी विद दैट लॉ ऑफ नेचर. नेचर का तो आज भी यही लॉ है, माइट इज राइट. लेकिन हम उसमें इतने खुश नहीं थे. हम उसे बदलना चाहते थे. वी वांटेड टू चेंज द कोर्स ऑफ नेचर with a stroke of human pen, right? That's why we made the first law. तो हमने लॉ बना दिया कि नहीं, अब ताकतवर तो बी है ज्यादा. बी ने बर्ड ले लिया. ठीक है. अब अगर हम उसको लॉ की सेंस में देखें, हम कहें कि आप आर्ग्यू करिए ए और बी. तो ए का क्या आर्ग्यूमेंट होगा? आप क्या आर्ग्यूमेंट देंगे? ए के पास क्या है? क्यों ए बर्ड ए का होना चाहिए? क्या आर्ग्यूमेंट देंगे आप? Because he hit it, he got the right to eat it. अब ए कह रहा है कि देखिए मेरे पास टैलेंट है. ठीक है ना. बर्ड अगर आकाश में उड़ रहा है, to shoot it down requires talent. Anybody and everybody cannot do that. So A says, I have that talent. And then, apart from talent, he has done labor. मेहनत भी किया उन्होंने. A says, I have got talent and I have got done labor. So I must be rewarded by law. Therefore, the bird is mine. Law must declare that the bird is mine. ठीक है. आपको appealing लगता है ये? Do you agree with A's arguments? Yes, yes, yes. अभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में भी तो यही आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं सारे. ठीक है ना. तो अब बी के पास क्या कोई आर्ग्यूमेंट है? कैन यू आर्ग्यू फॉर बी? Even though A had shot it down, B was the first one to claim it. राइट. सो बी कहता है, बी सेज, वेल यू हैव द टैलेंट टू स्नैच द बर्ड अवे फ्रॉम नेचर. आई हैव द टैलेंट टू स्नैच अवे फ्रॉम यू. मैंने आपसे ले लिया, ये टैलेंट मेरे पास है.
अब लेबर आपने की है तो लेबर तो मैंने भी की है, ठीक है ना? तो बी के पास भी अपने आर्ग्यूमेंट्स है और ए के पास भी, बट एट दैट स्टेज लेट अस गो बैकवर्ड्स एंड इमेजिन व्हेन देयर वाज नो लॉ, हम पहला लॉ बनाने ही वाले थे। एट दैट स्टेज वी रिकॉग्नाइज्ड वन काइंड ऑफ टैलेंट। अब देखिए ए और बी दोनों के पास टैलेंट है, इसे मानना पड़ेगा, और दोनों ने लेबर की है, तो हमें एक को चूज करना पड़ेगा कि बर्ड किसका होगा, वो प्रॉपर्टी किसकी होगी, ठीक है ना? दैट्स अ फंडामेंटल क्वेश्चन। So we chose, we said, yes, we will recognize one kind of talent and that is done by A. We will recognize one kind of labor that is done by A. The word belongs to A. All right. So on this theory, we are continuing till now, right? And we have defined all our property laws, made our property laws accordingly. So this is a brief introduction to law and legal systems. And okay, then there's another question. Does property law create things? Well, can you answer this question? Does property law create things? No. No, it only establishes the relationship between a thing and a person. So law itself does not create things. Okay. Now, अब law में कोई एक आंसर तो सही और गलत नहीं होता ना. It's all in the realm of debate. So let me challenge this answer. I say no, property law creates things. How? Now it is very relevant in the area of intellectual property. Say for example, intellectual property. Some people are talented. And law tells them, okay, you just go on creating and we will protect. Now, in the presence of that guarantee by property law, that whatever a person will create will be protected by property law, the person invests a lot of money, time, effort, everything in creative activity. So we can say that yes, property law also helps, though not directly, but it helps in the creative activity in the society. And that is the rationale behind all intellectual property laws. All right, because they give inducement for people to create. All right. Okay, so we'll skip this and okay, let us come to this origin and development of intellectual property. Now we know about various tools of intellectual property. The big tools of intellectual property are four: patent, trademark, copyright, and trade secrets. These are the big four. There are others as well, but then there are smaller ones. Their importance and magnitude. So now they were separate in their origin. जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ बना तो ऐसा नहीं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्टैट्यूट बन गया कोई, वो आज भी नहीं है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज ओनली एन अम्ब्रेला टर्म्स विद इन विच वी फाइंड कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट. और अगर हम इन तीनों स्टैट्यूट्स को उठाकर देखें, इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का तो कहीं नाम ही नहीं है. कॉपीराइट कॉपीराइट की बात करता है, ट्रेडमार्क ट्रेडमार्क की बात करता है, ठीक है ना? सो इट इज अ लेटर जनरलाइजेशन. Different concepts of copyright, patent, trademark, and trade secrets were combined together to form what is known as intellectual property. Okay. Now, before we had laws, we had, like, say, for example, this is the picture of Kalidas, who was a court poet during the reign of legendary king Vikramaditya. ऐसा हमने पढ़ा सुना है, ठीक है? So, उस समय कोई लॉ तो था नहीं कॉपीराइट का, ठीक है ना? तो कैसे प्रोटेक्ट होगा लिटरेचर जो वो इतना आर्ट वो जनरेट करेंगे? ही वाज अ ग्रेट स्कॉलर, ही वाज अ ग्रेट राइटर, एन ऑथर. So in those days, what happened? That kings would give scholarship, patronage, right? Patronage to such artists, right? That was the way of, giving encouragement to art and science in the society. Royal patronage. We see this is a stone carving of King Ashok, right? You can identify it with the help of that chakra that is there in Indian flag as well. So now Ashok was not an ordinary king of India. He was a great king of India, very different from all other kings. And
it is said that during in his kingdom, he had appointed 9, the famous 9 of Ashoka, 9 people of Ashoka. So they are commonly known as Ashoka. Who were those persons? They were great persons in their different fields, respective fields. So King Ashoka used to take counsel from those persons whenever required, right? Now, who were those persons? They were great creators in their own right. Somebody was a scientist, somebody was a musician, somebody was an author, etc., etc. Right? So when Akbar came to India, he searched a lot about the history of our country, and he came to know about the 9 of Ashoka. And so he also said, I will also appoint 9, which are known as Navaratnas. So those scholars were appointed. That means those great persons, they were given royal patronage. That was the way of supporting art and creativity. But, old kings of history have given way to the new kings of business and laws. Now things are being done differently. This is the picture of Saint Columba. Now, because we are going to the Genesis, Saint Columba went to his friend's house one day. Saint Columba was a pastor. Pastor means padri. Church में जो ऐसे होते हैं ना instruction देने के लिए. So he was like that. He was a person who was engaged in the worship of God and all. So he had a friend who was also a pastor. So once Saint Columba was visiting his friend. What he saw at his friend's residence, he had his own church. His friend had made a book that was like 12th century, sometime about 1,000 years back. So उनके friend ने एक किताब बनाई about church instructions. And in those days, one had to write on parchments in hand, अपने हाथ से लिखना पड़ता था. वो सब लिखने के बाद उन्होंने एक किताब बनाई. So Saint Columba saw the book and he liked the book. And he asked his friend, can you lend this book to me? I'll return it in a week's time. So the friend said, okay, take it. So Saint Columba took the book with him. And what he did when he was back at his home, he made a copy of the book. Of course, photocopier तो उस समय नहीं थे, तो खुद ही उन्हें मेहनत करनी पड़ी, हाथ से लिखना पड़ा. That he wrote. And after 1 week, as he had promised, he returned the book to his friend. When the friend came to know that Saint Columba had actually copied the book without his permission, he protested. He said, आपने किताब मांगी थी पढ़ने के लिए, कॉपी करने के लिए तो नहीं मांगी थी आपने. But Saint Columba's argument was कि अब किताब जब मेरे पास ही है तो मैं जो भी करूं, right? My only obligation was to return the book to you within a week, and that's what I did. But the friend was angry, and he took the matter to the court of King Dermot of Scotland, right? So King Dermot, अब उस समय में कोई ऐसे लिखे लॉ, कॉपीराइट का तो नाम ही किसी को नहीं पता था. आज तो हमारे पास ये डिस्प्यूट आएगा तो हम एकदम से उसे डिसाइड कर देंगे, लेकिन उस समय तो सारे केसेस किंग ही डिसाइड करते थे और कोई ऐसा लॉ लिखा भी नहीं था कॉपीराइट का. बट एनीवे, द फ्रेंड ब्रॉट द केस बिफोर द किंग डर्मिट. Columba was also summoned. So what do you think? Imagine yourself, take yourself back to that time, and your task is to decide the case in the absence of copyright law that we all know today. Okay. Can you do that exercise? Put yourself in the shoes of King Dermot. Yes, anybody? It would have been acceptable for the person to write the book, since the only obligation was to return the book. So the king also would have voted for this. Okay. Yes, anybody else? Okay. So let's see how the king decided. The king knew less about books and writing. The society was agrarian. People were not that much educated or read. So he drew an analogy. He said, imagine the friend had a cow. Saint Columba was visiting his friend, and Saint Columba borrowed the cow for a few days, which the friend lent. Now the cow was with Saint Columba. When the cow was with Saint Columba, she gave birth to a calf.
So the king framed the question, the calf belongs to whom? Right? He says, the calf belongs to whom? अब आप बताइए, the calf belongs to whom? So the king said, he framed the question and ventured to answer. He said, well, the calf belongs to the cow. And the cow belongs to the friend of Saint Columba. Therefore, the calf must also belong to the friend and not to Saint Columba. Similarly, he said, the copy of a book is like a baby of a book. So, if the book belongs to the friend, the copy of the book must also go back to the friend, and ordered Saint Columba to return. Now, you see, in 12th century, the case was decided with this logic. And exactly, if we have to decide it today, we will decide it in this fashion only. The only difference would be we will be citing some provisions of law, right? So what we can say is that it was, though intellectual property is new as a law, its history is, as a statute, its history is not more than 300 years old, but it was always there in the legal consciousness of mankind. We always knew about intellectual property, right? Like King Dermot knew about it 1,000 years back, right? So on this basis, we derive legitimacy of intellectual property laws, that we always knew about them. Only the conditions for the flowering and sprouting of those laws is now, right? Has recently originated. Okay. So that's how the laws have developed. We know Queen Anne, she made the first law of copyright. Similarly, we can read interesting cases about trademark, etc., right? So now we can say for copyright that human creativity plus technology gave birth to copyright. So we often say that copyright is the child of technology. Why? Because human creativity is old. We have been creative since long, right? We were painting on rocks thousands of years back. We composed hymns even when we did not write them. So we were very creative from the very beginning. We must have been singing, we must have been composing music, but then the traces are not left. But for other forms of works covered by copyright, the traces are there. But why did we require copyright only 300 years before and not before that? It's because the advent of the printing press in Germany in 14th century by Gutenberg. So what happened with the printing press is that it became a technology within the grip of so many people. So any book you like, you could just buy a copy of that book and start printing it, and then start selling it, and then start competing with the author and publisher of the original book. So that was happening. So publishers and authors, they felt that this is unfair. That we make so much of effort in writing a book and then publishing, and anybody comes and picks up the book and starts replicating it and starts earning at our expense. So they went to the queen. The queen agreed and made a law. And what law she made? She said, yes, the first written law of copyright, which gave 20 years to the authors and publishers to recover their investment, right? After 20 years, it will go in public domain. So an exclusive right was given for 20 years by the statute of Queen Anne. Okay. So that was the simplest law. After that, we have only enhanced the law, increased the span and spectrum of law. All right. Now, if we go to the leaving aside copyright, we move on to trademarks. So there was always, in a economy of a village of 1,000 years back, let's say there was a supplier and there was a consumer. So supplier A was supplying cloths, let's say garments, and the village would go to the supplier A and buy the garments from there. Okay. Now, one day what happened? Supplier B came on the scene, and he also wanted to sell cloths to consumers. So because he was not known to consumers, what he
did was he made cloths and he put A's name on the cloth. उसने A का नाम लिख दिया अपने कपड़ों पर और वो consumers को बेच दिए. Right? Now, in this scheme of things, in the absence of trademark law, do you think anybody has any remedy against B, against supplier B? आज तो हमारे लिए आसान है ना, हम कह देंगे कि हाँ जी ट्रेडमार्क लॉ है, B has violated A's trademark, but उस समय ट्रेडमार्क लॉ था ही नहीं. Has B done anything, any wrong in this? B ने A का नाम लिखकर कपड़े जो उसने बनाए थे वो बेच दिए कंज्यूमर को. कपड़े B ने ही बनाए थे, लेकिन उसने क्या किया था, A का नाम लिख दिया और कंज्यूमर को लगा कि ये कपड़े वो A से खरीदता आ ही रहा था. कंज्यूमर को लगा कि ये A ने ही बनाए हैं, तो उसने खरीद लिए. Has B done any wrong in this? Yes, anybody? Since B has not manufactured it, it may not be No, fair. B has manufactured his own cloth. The only thing is उसने A का नाम लिख दिया. B ने कहा कि मुझे तो कोई जानता ही नहीं यहाँ पर, तो मेरा कपड़ा तो खरीदेंगे ही नहीं, तो इसलिए उसने A का नाम लिख दिया. So trademark like ट्रेडमार्क तो उस समय था ही नहीं. नहीं, no, I'm telling you in today's context. हाँ, today's context नहीं, you have to go back. उस समय Be used as fame or his goodwill. name, yes, और वो तो ट्रेडमार्क ही हो गया ना. उस समय तो वो कॉन्सेप्ट नहीं था ट्रेडमार्क का. Goodwill. Okay. एक ही बात है. It was A's idea which B had used. हाँ तो ठीक है, आइडिया यूज कर लिया तो क्या हो गया. What is it wrong? ऐसा कहीं मना तो आज तो ट्रेडमार्क लॉ में मना है ना, हम नहीं कर सकते, प्रोहिबिशन है. उस समय तो नहीं था ट्रेडमार्क लॉ. But sir, उनकी परमिशन लेनी चाहिए थी A का नाम यूज परमिशन तो नहीं ली ना, नहीं ली. पर ऐसा कहीं लिखा भी नहीं था उस समय कि परमिशन लेकर ही यूज करना है, ऐसा तो नहीं लिखा था ना उस समय. Let the consumers by using the name. Yes. So if at all B had done anything wrong, it was a wrong done vis-a-vis the consumer. ठीक है, कंज्यूमर को तो धोखा दिया है. इट्स अ डिसीट टू कंज्यूमर. ठीक है ना. So at that time when B did it, the consumer had a law to use against B. Consumer could always restrain B, but we know consumer has never been empowered enough. कंज्यूमर को एक बार उसे पता चल जाएगा कि बी ने मुझे गलत कपड़ा बेच दिया, तो वो अगली बार उसके पास नहीं जाएगा, वो कोर्ट में नहीं भागेगा जनरली. ठीक है ना. तो because that was the situation, law felt like stopping B, stopping persons like B. Therefore, law made a new addition in the form of trademark law. And this trademark law gave rights to whom in these three things, three entities? A. So that is the function of trademark law. Consumer के पास तो right पहले से था ही, ठीक है, under the theory of contract or whatever. But then law wanted to empower A to support A, right? Therefore, trademark law was made, and with trademark law, A could sue B without consumer. A could directly sue B, right, and restrain B. Now that is the genesis of trademark law. Now, if we stop here, and I ask you another question, this trademark law is for protection of whom? Out of these three entities that you see on the screen, these are the primary three entities in trademark law. सारे trademark law में तीन ही लोग हैं. It is for the protection of A. Okay. Yes. Anybody else? This For trademark law is consumer. made for the protection of whom?
Choose one. Consumer, that they can verify whether. Okay. No. Choose one. Either A So or it is consumer. Okay. Now see, the thing is, law is giving, trademark law has given all the rights to A. We see that is the genre of trademark law. The rights have not been given to consumer but to A, right? So some people say that the trademark rights are given to A. Therefore, trademark law is for the protection of A. Therefore, trademark law is property protection law. But there is an equally important school of law which says that yes, rights have been given to A, but for whom? Not for A, but for consumer. Because consumer is not empowered enough, therefore, a Y media rights have been given to supplier A only in order to strengthen the rights of consumer. Therefore, even though the immediate rights are with A, the ultimate rights are for the protection of, the ultimate goal is to the protection of consumer. Therefore, that school of thought says that trademark law is consumer protection law, right? So it depends on, now if the question is to be asked whether trademark law is consumer protection or property protection law, how would you answer? Okay, so those, now it depends. The world is divided. Some scholars believe that trademark law is property protection, and some believe that trademark law is consumer protection, right? So it's not a question of right and wrong, it's a question of emphasis. And the interpretation of our legal provisions that we have made today depends greatly on which emphasis you make. If you belong to the school which gives more prominence to consumer and looks at trademark law as consumer protection law, then the interpretation of those provisions would undergo a change, right? So it depends on how you look at it, right? All right. Okay, then another tool of intellectual property is trade secret. We love secrets as human beings. We have always been, uh, happy to keep secrets and happy to break secrets, etc., etc. So we have devised various ways of keeping secrets. Some secrets were, not shared by the caste. Sometimes they were encoded in a particular language. Sometimes it was community-based secrets, and sometimes even country-based. For example, the secret of making silk. China did not allow the secret to go out of the country for centuries, right? So the secrecy was so strongly kept and maintained, right? So we have loved secrets. And today, trade secret is one of the recognized forms of intellectual property and very important form of intellectual property, right? That is trade secret. The difference between trade secret and other forms of intellectual property is that in India, we have not made a dedicated statute for trade secrets. But that does not mean that we do not have statutes that protect trade secrets. Like trade secrets could be protected by contract, by tort law, by law of crimes, right? For example, breach of trust and criminal breach of trust, etc. So those are the provisions that we can always utilize for trade secret protection. And it is one of the very important forms of protection of intellectual property. And it has a very close nexus with patents. Okay, so once a scholar had mentioned that patents are only advertisements for your trade secrets. Patent is open. Patent is something that you show, demonstrate to the world that you have this, only to say that you have much more. Okay, so you come to me, these are my patents, you come to me, I can give you much more than that. So that's how the practice, the business of trade secrets has developed around the world. Okay, patent also, man is a maker, has always loved making newer and newer things right from the days of inception. So that's how patent law has also grown. So, okay, now let us focus on this slide. All intellectual property springs from ideas, right? An idea originates in human mind. The idea is the progenitor of all forms of intellectual property.
Now, what all can you do with an idea? For example, you are struck with an idea, you are seized with an idea. What can you do? First thing you can do is to express it. हम उसको express कर सकते हैं. हम express कैसे कर सकते हैं अपने आइडिया को? What are the ways of our expression? Can you give some examples? How do we express ourselves? Speaking, writing. Right. Speaking, writing. What else? By framing, giving pictures, designs, gestures. Okay, gestures. Yes, very good. Okay. So all the ways in which human beings can express themselves, they are all protectable by copyright law. Now, copyright law is concerned with human expressions, and it does not miss out on a single human expression. हम जिस भी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, कॉपीराइट लॉ उसे प्रोटेक्ट करने की सुविधा देता है. ठीक है. सो copyright law for protection has got a condition. That is, it should be, your expression should be original. As long as your expression is original, law says we will protect you. But if it is not original, we will not protect you. Now, what is the meaning of the word original? Now, please tell me, because I have been speaking for the last 1 hour. I think have I exceeded my time? No, sir, you can continue. Original means idea and expression, both are same person from the same moment. Copyright law says that if your expression is original, then we'll protect you. What does this mean? So let's understand it with the help of an illustration. For example, Mr. A, he looked at the sunrise one morning, and he was so rapturous with the beauty of sunrise that he wrote a poem on the beauty of sunrise. That song he wrote in English language in the year 2010. All right. Now, a sun rises every morning, thankfully so. So Mr. B in 2015 was also looking at the sunrise, and he was impressed, and he also took to the pen and wrote a poem on sunrise, and by the stroke of chance, both the poems by A and B, though they are 5 years apart, but they were exactly the same, not an iota of difference. Okay. Now, the copyright belongs to whom? That is the question to you. एक ने वही चीज लिखी है 2010 में और एक ने लिखी है 2015 में. लेकिन बी ने जब 2015 में लिखी है तो ए से नहीं देखा. He had no means of looking at A, and he never peeped into A's work. Now the copyright belongs to whom? I think it is both, because the person who is expressing the thought, it's the origin from where the expression is coming. So both of them have this right. Both of them, both A and B. Yes. तो उनके बीच में झगड़ा नहीं हो जाएगा? दोनों के पास एक ही राइट. And as per what was said, that as long as the expression is original, then the right is there. All right. So original means something that originates from you. So the condition of law, copyright law, is that it should be original to you. Now this song is original to A, and B says it is also original to me. So if it is original to both get the same right under copyright law. Okay. So that's how we give treatment to creativity in copyright law. Now let's move towards patents. Patent is for execution. Like copyright was for human expressions and all human expressions, patent is for all human executions. Execution means making something. So let's say A made a medicine in the year 2015. Right? He made a medicine after a lot of research of 5 years. He made a new drug.
to cure a disease. So he went to the patent office and he was granted patent. B, because A was working from 2010, it took 5 years for him and he went to the patent office in 2015 and he got the patent. B was working from the year 2008. वो 2 साल पहले से लगा हुआ था उसी चीज को बनाने. उसने कभी देखा नहीं, ना A ने B को देखा, ना B ने A को जाना. So B also made the same medicine, the same drug, exactly the same. But he made in 2016, 1 year later to A. And he also goes to the patent office. वो कहता है जी मुझे भी दे दो. तो क्या पेटेंट ऑफिस उसे भी पेटेंट दे देगा? No. But why no? First to file. Whoever is first to file at the patent office. हाँ, first to file मतलब new. Yes. तो पेटेंट ऑफिस कहेगा कि you are not new. See, you are not new. Patent office says no to him. And what's the reason? He says, patent office says to B that you are not new. So in similar situation, we see copyright is more accommodative and patent is less accommodative. And that is because of the market. That is because the difference in the sphere of things. Therefore, we say that now that the treatment of subject matter is different in that way. In patent, that is the difference between newness and originality. All right. So let's move on to an idea comes to a person's mind and he gives an identity. उस आइडिया का कुछ नाम दे दिया उन्होंने, ठीक है, उस आइडिया को कुछ नाम रख दिया. Now उस नाम से क्या कर सकते हैं? On that name, on that identity, that person can get a trademark, provided the mark is distinctive, right? जैसे कंडीशन कॉपीराइट में ओरिजिनल है सबसे बड़ी कंडीशन, पेटेंट में न्यूनेस है और ट्रेडमार्क में है डिस्टिंक्टिव. डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है. आइडेंटिटी का मतलब होता है मार्क देना, किसी को नाम रख देना, सिंबल रख देना, ठीक है, एक आइडिया का. फॉर एग्जांपल, आई हैव गॉट एन आइडिया ऑफ डूइंग बिजनेस इन टेक्सटाइल्स, सो आई गिव द नेम टू माय बिजनेस, दैट इज एक्स. मैंने एक्स नाम रख दिया और मैं ट्रेडमार्क ऑफिस में जाता हूं तो ट्रेडमार्क ऑफिस मुझे क्या कहेगा? यस, वी विल ग्रांट यू ट्रेडमार्क प्रोवाइडेड योर मार्क इज डिस्टिंक्टिव. Now, what is the meaning of the word distinctive? हमने सबने पढ़ा तो है ये ट्रेडमार्क एक्ट में डिस्टिंक्टिव लिखा हुआ है. इस डिस्टिंक्टिव का मतलब क्या है? That mark has not already been used by someone else. डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है ना. अगर हम डिक्शनरी में देखेंगे तो डिस्टिंक्टिव इस वर्ड का मतलब होगा डिफरेंट, ठीक है ना. तो डिफरेंट, अब किससे डिफरेंट? हम कहें जी मैं तो अलग हूँ, ठीक है ना. मैं कहूँ कि मैं अलग हूँ तो मैं किससे, आप पूछें किससे अलग हो आप, ठीक है ना. तो हम कहते हैं कि योर मार्क शुड बी डिस्टिंक्टिव. ट्रेडमार्क ऑफिस कहता है कि आपका लॉ ये कहता है, ट्रेडमार्क एक्ट, योर मार्क शुड बी डिस्टिंक्टिव, मतलब डिफरेंट. तो किससे डिफरेंट हो? इसको आंसर करिए आप. द मार्क शुड बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट? So from the other services or goods, similar field. From other trademarks? Yes. Okay, anybody else? From the previous one, whatever available in the same junction, previous one are different and this one is different. That is right. So no, that those I don't agree with both the answers. It should be different. That's right. But different from what? Your trademark must be different, but different from what? It's competitors' trademark. No. It should be unique in that area only then. No, unique. Unique होता तो हम कहते new. New means unique. लेकिन हमने new नहीं कहा. हमने कहा है different. लेकिन different से काम नहीं चलता ना हमारा. Different जब तक हम ये ना बताएं different किससे. So that is a fundamental question in trademark law. Different from what? So, yes, go ahead. In the manner of shape and design, it's different. No, it should be different from the goods for which it is sought to be used. Like apple is a bad trademark for fruits.
because it is not distinctive. It is devoid of distinctive character. But Apple is a good trademark for computers. So it should be different from the goods. That is the requirement of law, right? And the fourth one, we go to trade secrets. That means law says that if you have an idea, you can keep back. That means hold it back. And if you have made a positive effort to keep it secret, we will protect. All right. So this is just a snapshot of different forms of intellectual property. And we have gone to the very, very basic things of their protectability, their origin, their importance, etc. So I think I have spoken a lot today, and if you permit, we can stop here for today. If you have any questions, I'll be glad to answer. Thank you, Professor Mittal sir. Now I would request participants, if you have any question, query, platform is over to you. You can unmute yourself and one by one you can put your questions to sir. Dumali sir? Hello. Yes. Yes. Can you read out the questions of YouTube channel? Just a minute. Just a minute. Yes, madam. Actually, till now there is no question because I think sir is already he has conducted his speech with the interactive methods. So I thought that there is no question at this moment. Madam. Yes, sir. Sir, you have taken a session very practically and in the very thought-provoking process was adopted by you. So I think minutely the questions of candidates, participants are already satisfied. If anyone wants from teachers, faculty, they are welcome. Yes, participants. May I? Yes, Prem sir, please. प्रणाम सर नमस्कार नमस्कार जी कैसे हैं आप बहुत बढ़िया सर after a long time it's good to see you and even online but and your session you know it's I knew you and it's a very interactive one not only the interactive one but the way it has been elaborated by sir it's great for the students newcomers and teachers as well those who are having different concepts in regard to the IPR issues and सर ने जैसे प्रॉपर्टी लॉ एंड अब आईपी में आ जाओ तो जिस तरह से कनेक्ट किया तो प्रॉपर्टी तो बहुत वास्ट है और प्रॉपर्टी लॉ में जैसे मैं सर शुरू से ही प्रॉपर्टी लॉ पढ़ा रहा हूँ अब प्रॉपर्टी लॉ में मुझसे पूछते हैं कि आईपीआर भी पढ़ाते हैं मैंने कहा आईपीआर का एरिया है वो प्रॉपर्टी लगता है कि प्रॉपर्टी है लेकिन वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाले इंटेलेक्चुअल्स ही पढ़ाते हैं तो मैं तो अपनी जमीन की बात करता हूँ मूवेबल इमूवेबल की बात करता हूँ थोड़ी बहुत बाकी इंटेलेक्चुअल्स का एरिया इंटेलेक्चुअल्स ही देखते हैं सर थैंक यू एंड thanks to the college administration to Vijeta ma'am and all the coordinators of this program for a wonderful and successful program and these times where we are able to connect with the people online and it's an easy mode but not the effective mode sir I think you may agree with me नोट एज सच इफेक्टिव विच हम स्टूडेंट की आंखों में आंखें देखकर डालकर कहते हैं कि समझ में आया ऐसे ही पूछ लेते हैं ऐसे सामने सामने से वैसे वाला फील नहीं आता लेकिन बहुत बढ़िया है सर थैंक यू टू द कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन एंड द प्रोग्राम organizer and to Ramana Mittal sir after a long time college has given me a chance to listen you thank you sir Thank you, Dr. Premchand, for your kind contribution. So, Mittal sir, we are highly. Ask one question. Yes, sir. Please. Yes, ma'am. Yes, sir. Please. Thank you, sir. I would like to ask one thing. As per Marx's perspective, that industrial society was analyzed with the division of class with
the proletariat and bourgeoisie. So on that basis, like, can we say that this IPR regime divides society into the knowledge worker and knowledge owner? Sir, this is just query. Yeah, definitely. I think you can divide it, but then there are multiple ways, I would say, to approach a particular concept. So in a way, intellectual property is great equalizer too. You can write, you can create, you can invent, you can sell. If you have, like, it requires not much precondition, right? So the this whole new knowledge economy is a shift from see, the importance of land and other resources is diminished now. That's why I asked in one of the questions during the presentation, what is the biggest asset today of those companies, those big business houses? It's not land and property in that sense, in the traditional sense. It is something different. It is their knowledge component, right? Which has become important. So we can also say that it's a great equalizer in the world, right? It has the potential that if somebody is willing to work hard, then yes, the world is open for him or her through intellect, but he will or she will have to earn for himself and herself the intellectual property, which is the currency of 21st century. Thank So, you, sir. Thank you very much. Hello, sir. Yes. Yes, Mr. Junaid, you can ask. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. So it has always been a pleasure to hear Professor Raman, sir. So it was really an enlightening lecture. Though I have the specialization in IPR, I have done the doctorate in IPR, but I really enjoyed this lecture, the way he delivered, the sir delivered it. So my question is, sir, how far do you agree that that we see that there are some areas in the IPR which need to be revisited, so that the IPR, different areas of IPR, be it copyright, patents, or the trademarks or geographical indications, don't lose relevance in the present era, in view of the technological developments that are rapidly taking place. For instance, I would like to refer to, say, for example, there is a thread that runs through all the IPRs, be it the copyright or the patent. That is the balance between the public interest and the private monopoly right that is given to an inventor or that is given to an author. So there is one concept that is fair use in copyright or compulsory licensing in the patents. So the fair use was, it's a sort of exception to this copyright, which enables the public to have an access to the creative works of the authors, which will not, it actually strikes a balance between the private interest of an author and the public interest. Now we have the exceptions. Do you feel that it is good? Now this provision was incorporated there when there was no technology, and it was very difficult to create the work, to reproduce the work. Now when you have the technology available today, you can create the work, you can reproduce the work as an author of the that work so easily. Should we make it too much difficult for the public to have an access to it? Don't you think that we need to revisit, among other things, this concept of fair use also in this digital era? This is just one. Sir. Okay, let me just Thank see if I can answer with the help of some of my slides. Okay, this is the question that you raised, public versus private interest. Thank you, sir. Right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so the whole gamut of intellectual property is, many times it involves a pitching of private interest vis-a-vis public interest, right? Now, let us solve this with the help of this circle. If we draw this circle, one circle that you see, and call it public interest, how would you draw private interest, and where would you draw private interest? How would you draw private interest? I think if we will talk in terms of the balance, I think the size of the private interest circle will also be the same as that of the public interest. Okay, so jurisprudentially speaking, I would like to draw like this.
because public is all encompassing. When we talk about public interest, we don't leave anybody outside it. Even the creator's interest falls within public interest because he is anyway, he rises from the public and creates something, and we grant him rights. So his own private interest falls within public interest, and we are taking when we have decided to take care of public interest, we take care of all. Why should we leave aside that private individual who is the author and owner of intellectual property? That is what I feel. Okay. But then this debate, the whole debate of intellectual property in the modern times is private versus public, right? So we have seen in India, for example, we have decided in the last decade cases like NATCO versus Bayer, Roche versus Cipla, Novartis versus Union of India, and to add it to it, this list is the Delhi University photocopy case, right? Which have sent a strong message to the world where, you know, the public interest aspect of the law has achieved a lot of prominence, especially in India. Of course, whichever way we decide, it always has its own merits and demerits. That's the character of law. Bentham himself said, the purpose of law is to achieve the greatest benefit to the greatest number of people. So it's not, he doesn't say the all the benefit to all the people. No, can we make such a theory? We in India, we have said सर्वे भवन्तु सुखिनः कि सारे सुखी हो जाएं. like ऐसा क्या हो सकता है? हमें कैसा फार्मूला हमारे हाथ लग जाए कि सभी सुखी हो जाएं? ऐसा आज तक तो नहीं हुआ. That is an ideal, right? So we say our Indian theory of saying सर्वे भवन्तु सुखिनः is an ideal concept, is a utopian concept, right? It's an ideal worth pursuing. We should pursue. But then Bentham is more practical. He says, well, नहीं कर पाओगे. Greatest benefit to the greatest number. उतना ही हो जाए बहुत है हमारे लिए, ठीक है ना? So this is always a debate. So intellectual property participates in that. हम सबको कभी भी satisfy नहीं कर पाएंगे किसी भी theory से, right? Now take the example of Novartis, or take the example of the compulsory license that we granted in NATCO versus Bayer. Now Bayer says that हमने तो इतने साल मेहनत की, इतने साल मेहनत करके दवाई, अभी क्या हो रहा है? सब लोग कहते हैं कोरोना वायरस की दवाई आ जाए, हमारे हाथ मेडिसिन आ जाए, ठीक है? So many companies, so many businesses, they are working day and night. So many scientists, so many Nobel Prize winners, they are working on a vaccine which is 100% sure. They are working on a possible cure for that. अरे उनको बहुत मेहनत वो कर देंगे, ठीक है ना? और उसके बाद क्या होगा? मान लीजिए दवाई निकल जाती है तो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, this is the common heritage of humanity. अब ये तो हमें सब फ्री दे दीजिए आप. अब वो भी ठीक है, because otherwise so many people will die. So that's a dilemma. जो कंपनी, जो साइंटिस्ट वो बनाता है, वो ये कहता है कि अरे हमने तो इतनी मेहनत कर ली, हमें रिवार्ड तो दे दो. So this conflict between private and public, as you have rightly put, will always be there, right? Has always been there in the society in some way or the other, and it's more so in the domain of intellectual property, whether it is patent, and it is more so in patent and copyright. All right, we have seen it in these cases. These are worldwide. These cases have generated a lot of debate worldwide, right? But then we have to make a choice. Every choice, any choice we make has a flip side. Though law is represented by a scale, a balance, balancing competing interests is our primary job. So balancing exactly that they are evenly poised becomes difficult. And as you have said, we have to visit and revisit the balance again and again. It is not an exercise which we strike once and for all. We have to do it again and again. And in intellectual property, we see it day in and day out, that this balance is to be, guarded. And for that, for guarding and maintaining that balance, we need to look and relook at our laws, at the decisions that we make into the courts, at the administrative practices around intellectual property. All right. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, sir. I think Mittal sir has given his wholehearted contribution, and all the questions are satisfied from the participant side. So this time, now I express my sincere thanks and profound gratitude towards Professor Dr. Mittal. Sir, you have given a very fabulous, wonderful words, and it was a very interactive session, informative as well as interactive. Your knowledge in the area of jurisprudence of IPR was outstanding, and we are very delighted to listen you on this platform.
So we are always, on behalf of my institution, KC's SS Mania Law College, on behalf of my respected principal and all the faculty member and participant, I express my sincere gratitude towards you. We will be always willing to listen you again and again. So if situation allow, definitely in future we'll call you in physical appearance. Thank you for your nice, wonderful, kind contribution. Thank you, Mithil sir. Thank you very much. Thank you Friends, so much. Thank you. Goodbye. Thank you, sir. Mittal sir. Thank you, Vijeta madam. Thank you, Reddy sir. So now we are moving ahead towards our second session. Friends, as after the intellectual property, by hammering over our intellect, now we are moving towards the emerging trends of cyber crimes. And today we have with us the expert of cyber crimes amongst us, Mr. Deepak Lagar. By profession, he is a senior police inspector, but he has his specialization to doing investigation, especially in the cybercrime area. So Mr. Deepak Lagar has served in the area which are very, very tough and dangerous in the Maharashtra territory. He served in the Nagpur, Gadchiroli, in our Jalgaon also. He completed his BSc, LLB and LLM. We are glad to express he is our own alumni, and he is having great experience of 26 years. He served in the cyber cell as a special officer of investigation in the cyber crimes at Pune. Still, he is continuing in the Pune and having lot many responsibilities and his expertise over the cyber area. So without wasting a time, I would like to call upon Mr. Deepak Lagar sir, our second resource person. Sir, mic is over to you. Please take over the mic. Thank you, ma'am. Can you hear me? Yes, sir. Audible. Respected Principal Sri Reddy sir, Vijay Singh ma'am, respected Sri Sagar sir, Oja ma'am, all dignitaries and other faculty members and dear students. Today, I have given the topic of emerging trends of cybercrime. First of all, we'll discuss what is cybercrime. Cybercrime is such an activity, it is a criminal activity which is done with the use of computers, electronic devices, and internet. So, whichever crime, whatever crimes happens with the help of computers, internet, and all that, that is called as cyber crimes. This crime is happening and increasing rapidly in Pune, not only Pune, but all over India and world also. School students and college students are most common victims of this attack. The world cyber now, when we look at ourselves, we all are connected to internet and cyber spaces. What is cyberspace? Cyberspace is connection of internet and all that. Now, हम लोग जो सभी लोग as हम देखते हैं कि हम सभी लोगों के पास इंटरनेट है, कंप्यूटर्स है, मोबाइल्स है, तो हम सभी लोग इंटरनेट से साइबर स्पेस को जुड़े हुए हैं और हम लोग सभी लोग रोज इंटरनेट का इतना ज्यादा यूज करते हैं कि हम सभी इसके लिए एक प्रे या विक्टिम हो चुके हैं। हम सभी लोगों को मैक्सिमम प्रिकॉशन लेना पड़ता है। तो साइबर क्राइम जो इमर्जिंग है या इंक्रीजिंग है, उसका रीजन मेन ये है कि इंटरनेट का यूज मैक्सिमम हो चुका है। हम सभी लोग इंटरनेट डे टू डे लाइफ में इतना यूज करते हैं कि हम देयर आर चांसेस ऑफ इंक्रीजिंग एंड फॉलिंग, वी ऑल प्रे टू दिस साइबर क्राइम। Now, what is cybercrime? As I defined, cybercrime is defined as cybercrime which is happened because of using computers and internet. Secondly, why it is happening? The reason behind these computer cybercrimes is, number one is money and number two is revenge. How it happens? Cybercrimes are using multiple tricks to cheat victims in cybercrimes like phishing, wishing, social engineering, impersonation, use of malware, Trojan horses, etc. Now, why people fall prey to cybercrime? Number one is greed. Most of the cyber criminals exploit the greed of people to earn more and more money. Number two is fear. People who get conned due to fear of getting blocked from their accounts and to lose their privacy. हम लोगों का जो fear है कि हमेशा हमें कॉल आता है
कि बोला जाता है कि आपका अकाउंट ब्लॉक किया जाएगा या आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ब्लॉक किया जाएगा। तो ये जो डर है इसके कारण हम सोचते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। इस डर से हम मैक्सिमम टाइम्स जो ओटीपी शेयर करना है या ऐसे जो भी चीजें हैं हमारी इंफॉर्मेशन शेयर करना है ये हो जाता है। थर्ड वन इज लैक ऑफ अवेयरनेस। Most of the people are unaware about their privacy and normal functioning of UPI apps and banking. Unawareness। अभी इसमें क्या होता है कि हम जो लोग डे टू डे लाइफ में यूपीआई एप्स यूज कर रहे हैं, बाकी सब ऐप यूज कर रहे हैं, लेकिन ये सबका हमारे पास अवेयरनेस नहीं है हाउ टू यूज इट। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि सपोज वी आर यूजिंग एपीआई ऐप, कोई भी यूपीआई ऐप है अपने पास, हमें किसी को पैसे भेजना है या किसी से पैसे एक्सेप्ट करना है, तो इस सब की चीजों के लिए हमें किसी भी तरह का ओटीपी शेयर करने की जरूरत नहीं है, या फिर जो भी हमें कोई लिंक्स आते हैं उस पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हो जाता है कि कोई स्कैन कोड आता है या कोई भी चीज होती है हम उसको स्कैन कर देते हैं। अगर किसी को हमें पैसे भेजना है तो कैसे भेजना जाता है, भेजे जाते हैं, यूपीआई से ट्रांजेक्शन कैसे होते हैं, इस सब का जो अवेयरनेस है ये हमें आना चाहिए। उसके बाद में ही ये हो सकता है कि हम उस चीज को हम उसको प्रे ना पड़े। स्टुपिडिटी, पीपल ट्रस्ट इजिली एंड गेट कॉन। अभी क्या होता है कि कोई भी हमें अगर फोन करता है, कोई चीज मांगता है, बताता है कि यार आपका ये इस तरह का अकाउंट मतलब हैक हो चुका है, या फिर सिंपल सिंपल सी बातें हैं। हम डे टू डे लाइफ में रोज न्यूज़पेपर्स में पढ़ते रहते हैं कि क्या हो रहा है पूरी दुनिया में, कैसे कैसे फ्रॉड चल रहे हैं, लेकिन हम लोग पढ़ के भी हमें लगता है कि कोई इसी टाइप का फ्रॉड होता है, लेकिन इसी टाइप का एक ही फ्रॉड नहीं होता है। इमर्जिंग इसमें क्या होता है कि हर जो ये साइबर क्राइम करने वाले क्रिमिनल्स है ये कोई नया ढूंढते हैं, उनको पता है कि कुछ नया चीज करना है। अभी बीच में एक ट्रेंड आया था कि कोई भी अभी आपको फोन करेगा और आपको बताएगा कि मैं फलाना आर्मी का बंदा हूँ और मेरे पास कोई गाड़ी है तो मुझे बेचनी है या फिर खरीदनी है। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है मैक्सिमम टाइम्स की हमें लगता है कि कोई आदमी का फोटो दिख रहा है, उसका आइडेंटिटी दिख रहा है पूरा, और हम उसको प्रे मजो हो जाते हैं कि हम बोलते हैं कि यार ये सच्चा बंदा है, आर्मी का यूनिफॉर्म पहन के रखा है, उसके पूरे कार्ड भेज रहा है, आधार कार्ड भेज रहा है, आई कार्ड का फोटो भेज रहा है। तो ये जो होता है ये हम इजीली ट्रस्ट करते हैं किसी के ऊपर, ये ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। हमें हर चीज में, हर कोई भी हमें मैसेज आता है, कोई भी लिंक आती है, कोई भी आता है, तो हमें एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आना चाहिए कि व्हाई मी। अब ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमें ही क्यों आता रहा है। सपोज अगर किसी को लॉटरी लगती है तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये लॉटरी का हमें ही मैसेज क्यों आ रहा है, कोई मेल आ रहा है, कोई मैसेज आ रहा है, तो हमें ही क्यों आ रहा है। ये लिंक्स आते हैं, जैसे कि कोई भी लिंक आता है कि कोई चीज सस्ते में मिल रही है, सपोज अमेजोन का लिंक है या कोई भी लिंक्स है, तो ये सब लिंक भी हमने देखा है कि ये सब लिंक के पीछे भी बहुत सारा डेटा छुपा हुआ होता है। हम जिस मोमेंट को इस लिंक को क्लिक करते हैं तो हमारा डेटा जो है वो भी उनके पास चला जाता है। तो ये स्टुपिडिटी जो है, हम किसी भी चीज के ऊपर ट्रस्ट कर देते हैं, कोई मतलब फ्री में शूज बांट रहा है, कोई फ्री में मोबाइल बांट रहा है, कोई भी हो रहा है, लेकिन ये हमारी स्टुपिडिटी है कि हम इसके ऊपर जल्दी से ट्रस्ट कर देते हैं। दूसरी एक बात होती है कि एक इग्नोरेंस होता है कि पीपल आर इग्नोरेंट टुवर्ड्स देयर डिवाइसेस सिक्योरिटी। अब ये डिवाइसेस सिक्योरिटी क्या है कि हम जो भी डिवाइस यूज कर रहे हैं, हर चीज का इंटरनेट पे जो भी चीज यूज होती है हर चीज का सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज हम हमारा मोबाइल भी यूज कर रहे हैं तो हम बिना लॉक को उसको छोड़ते नहीं है, तो उसी तरह से हमारा वाईफाई है या फिर हमारा फेसबुक अकाउंट है, कोई भी अकाउंट है। अभी फेसबुक अकाउंट की सबसे ज्यादा घटनाएं हमारे सामने आ रही है। उसका रीजन भी है कि हमारे जो फेसबुक अकाउंट्स है ये सिक्योर्ड नहीं है। हमारा जो प्रोफाइल होता है ये सिक्योर्ड या लॉक होना चाहिए। अभी मैक्सिमम जो इमर्जिंग ट्रेंड्स में जो अभी मैं बाद में बताने वाला हूँ आपको, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये फेसबुक का ही हो रहा है कि आपका फेसबुक अगर ओपन है, कोई भी आपका फेसबुक के प्रोफाइल देख सकता है, फोटो देख सकता है, तो उसको या तो फेक प्रोफाइल बनाएगा, फेक फेसबुक बनाएगा, या फिर आपके जो फ्रेंड लिस्ट है उनका फोन नंबर अगर किसी का डिस्प्ले होता है तो उसको फोन करके आपके बारे में कुछ गलत बता के उससे पैसे लेने का कोशिश करेगा। तो फ्रॉड्स के जो टाइप्स देखे गए हैं वो अभी साइबर फ्रॉड्स में, जब साइबर क्राइम में हम जब देखते हैं उसमें नाइजीरियन फ्रॉड है, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड है, फिशिंग अटैक्स है, सोशल नेटवर्किंग है। तो सोशल नेटवर्किंग में साइबर स्टॉकिंग, पोर्नोग्राफी, आइडेंटिटी थेफ्ट, ईमेल क्राइम्स है, सेल ऑफ इलीगल आर्टिकल्स, नार्कोटिक्स, वेपन्स, वाइल्ड लाइफ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का सर ने अभी भी बताया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्राइम्स है जिसमें सॉफ्टवेयर पायरेसी आती है, कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट आता है, ट्रेडमार्क वायोलेशन, थेफ्ट ऑफ कंप्यूटर सोर्स कोड डेटा थेफ्ट एक्सेट्रा। तो इसके अलावा हम जो देखते हैं तो साइबर टेररिज्म भी एक है, इसमें डिडोस टेक्निक्स ये भी आता है।
अभी जो इमर्जिंग साइबर क्राइम में देखा जाता है कि अभी आज का ट्रेंड क्या चल रहा है, तो उसमें सबसे ज्यादा चल रहा है कि साइबर सेक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन तो हम सब लोगों को पता है, लेकिन एक सेक्सटॉर्शन है। व्हाट इज साइबर सेक्सटॉर्शन? क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम्स पे कि आपने को किसी भी बंदे को कोई लिंक आ जाती है और उसे बोला जाता है कि आपका फ्रेंडशिप के नंबर चाहिए, आपका व्हाट्सएप नंबर चाहिए किसी भी तरह से। तो जब भी आपका नंबर उन्हें मिलेगा तो उसी समय आपका उनका आपके साथ चैटिंग शुरू हो जाएगा। इसमें मैक्सिमम ये देखा गया है कि कोई भी लड़का है, उसे किसी लड़की का मैसेज आ जाता है या फिर कोई लिंक आ जाती है, कोई फेसबुक फ्रेंड्स रिक्वेस्ट आ जाती है, तो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद में ये देखा गया है कि मैक्सिमम टाइम्स आपको या तो उनका कोई प्राइवेट पार्ट दिखाए जाएंगे या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका प्राइवेट पार्ट दिखाने के लिए बोला जाएगा। ये देखने के बाद में जैसे ही आप कोई भी आपका खुद को एक्सपोज कर देते हैं, तो उसी समय वो उसका वीडियो बना लेते हैं, या फिर उसके अगर वीडियो ना भी बनाए, अगर आपने अगर कोई मतलब कोई बंदा कोई स्टूडेंट अगर होशियार है तो ये भी दिखा गया है कि वो शायद खुद का मतलब एक्सपोज ना करे खुद के प्राइवेट पार्ट्स को वगैरह। तो उस समय वो क्या करते हैं कि आपका उनको अगर फेस का भी फोटो मिल जाता है तो उसको मार्क करके वो आपको दिखा देते हैं, फिर से आपको फोटो भेज देते हैं, आपके प्रोफाइल पे फेसबुक पे डाल देते हैं। तो आपको ये बताया जाता है कि अगर आपको ये आपके फ्रेंड्स को ये सब नहीं भेजने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। दिस कॉल्ड एज साइबर सेक्सटॉर्शन। ये नया इमर्जिंग क्राइम है इसमें। फिर नेक्स्ट आता है कि अभी सबसे ज्यादा हम देखा गया है कि पूरा लास्ट का मोर देन 1 ईयर हम लॉकडाउन के थ्रू जा रहे हैं। तो लॉकडाउन में ये देखा गया है कि सभी चीजें ऑनलाइन ऑर्डर देने का काफी ज्यादा चल रहा था। मतलब कुछ हद तक डिलीवरी चालू थी, कुछ हद तक इट वाज अलाउड टू डिलीवर द गुड्स लिकर्स एंड ऑल दैट स्टफ टू योर डोर। तो उस समय भी देखा गया है कि अभी क्या होता है कि हमें पता होता है कि हमारे एरिया में या हम जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले में कौन सा शॉप है, वाइन शॉप। अगर किसी को सपोज ऑर्डर करना है, कोई डिलीवरी चाहिए, तो वाइन लिकर डिलीवरी वॉज अलाउड दैट टाइम। तो उस समय भी देखा गया है कि ये जो भी शॉप्स है, शॉप का जो नाम है इसको कॉपी किया जाता है और इंटरनेट पे इनके नाम ही नहीं करेगा, इसी शॉप का रहेगा, लेकिन इसी शॉप के साथ मोबाइल नंबर उनके रहेंगे। तो मोबाइल नंबर उनका रहने के बाद में अगर वो कोई उसको कॉल करता है, कोई लिकर की या किसी और चीज की डिलीवरी मांगता है, तो उसी समय वो तो पैसे ही चाहिए। सबसे पहले तो आपको पहले पे करना है तो पैसा पूरा चला जाएगा आपका। तो इसी तरह से बाकी गुड्स के बारे में भी कोई भी डिलीवरी आपको करना है तो भी आपका पैसा उसमें पहले चला जाएगा। और उसके साथ में अभी अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जो इग्नोरेंस है हमारा, हमें इस चीजों का पता नहीं है। तो एक बार अगर किसी का पैसा चला जाता है, उसमें कहीं 10,000 चला गया, 20,000 चला गया, तो उसके बाद में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम से देखा गया है कि वो लोग आपको फिर से फोन करते हैं और बोलते हैं कि आपका पैसा हमारे पास आ चुका है और हम आपको लौटाना चाहते हैं। तो पैसा लौटाने के लिए फिर से वो आपको कोई स्कैन कोड या कोई और ऐसी लिंक भेजेंगे, तो उसके थ्रू आप जैसे उसको क्लिक करोगे तो आपका फिर से डबल पैसा चला जाएगा। तो ये हमें अवेयरनेस नहीं है हमारे पास कि किस तरीके से हमें उसको प्रिवेंट करना है। उसके कारण हमारा 2 टाइम्स चीटिंग होता है इसमें। अभी और एक बात देखी गई है कि अभी जो इमर्जिंग ट्रेंड्स है फिलहाल, तो उसमें फेसबुक हैकिंग या फेसबुक डुप्लीकेट किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि हमारा कोई जिस बंदे का फेसबुक का प्रोफाइल है वो अगर ओपन है, वो अगर उसका प्रोफाइल लॉक नहीं है, तो वो सभी लोगों के लिए फ्री है, सभी लोग उसको देख सकते हैं। अब देखने के बाद क्या होता है कि उसका सेम ये करके नाम यूज करके या फिर उसका फोटो यूज करके फिर से थोड़ा सा चेंज करके प्रोफाइल बनाना, नया फेसबुक अकाउंट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये साइबर क्रिमिनल्स में बहुत ज्यादा माहिर है। तो ये होने के बाद में क्या हो जाएगा कि जैसे आपका दूसरा फेसबुक प्रोफाइल बनेगा, तो उसमें से आपके जो भी फ्रेंड लिस्ट थी उस सबको फिर से मैसेज जाएगा कि मेरा अकाउंट चेंज हो चुका है या फिर मेरा ये नया अकाउंट है। ये होता है। तो वो नया अकाउंट में जैसे ही ये लोग फ्रेंड्स उसके बनते हैं तो उनको मैसेज चला जाता है या फिर उनको मेल भी चले जाते हैं काफी बार कि मेरा एक्सीडेंट हो चुका है या मुझे कोविड के कारण बहुत सारा पैसे की जरूरत है। तो सभी लोगों को मैसेज डालने के बाद कुछ लोग उसमें से 2 लोग 4 लोग पैसे पे कर देते हैं। तो इस तरीके से भी ये चीटिंग होने का आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। अब ये कह रहा है कि व्हाट्सएप हैकिंग भी होता है। अब ये व्हाट्सएप हैकिंग नॉट एग्जैक्टली व्हाट्सएप हैकिंग, लेकिन क्या होता है कि जिस लोगों के पास में व्हाट्सएप नहीं है और जो सिर्फ मोबाइल यूज कर रहे हैं, सिर्फ नंबर उसका यूज कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों का मोबाइल नंबर पे अगर समझो किसी बंदे को, मुझे अगर मैं चाहता हूँ कि कोई नया व्हाट्सएप अकाउंट खोलूँ, तो व्हाट्सएप अकाउंट के लिए क्या मुझे चाहिए कि सिर्फ एक मोबाइल नंबर चाहिए, एक मोबाइल चाहिए इंटरनेट का। जैसे ही मैं किसी मोबाइल नंबर डाल के उस पर व्हाट्सएप अकाउंट या नया व्हाट्सएप नंबर चालू करना चाहूंगा, तो वो जिसका ओरिजिनल नंबर है उसको एक ओटीपी चला जाएगा। बस एक वो दैट ओटीपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या होता है मैक्सिमम टाइम्स ये देखा गया है कि ये लोग उससे कुछ तो चीटिंग करके बोलते हैं कि आपका मोबाइल का ये जो है
वो बंद होने वाला है या फिर रिचार्ज बंद होने वाला है, तो आपको एक ओटीपी भेजा है, ओटीपी हमें शेयर कर दीजिए। तो जैसे ही ओटीपी शेयर कर किया जाता है तो उसका नया व्हाट्सएप का फोन नंबर एक्टिवेट हो जाता है। अभी ये जो ओरिजिनल फोन नंबर वाला है उसको तो पता ही नहीं कि मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप का नया नंबर या नया अकाउंट चालू हो चुका है। लेकिन वो नया अकाउंट, नया व्हाट्सएप ये चालू हो जाता है, तो जैसे वो चालू हो जाता है तो उसके थ्रू कितने भी ऑफेंस कोई भी कर सकता है। किसी को व्हाट्सएप कॉलिंग कर सकता है, किसी को नए नए फ्रॉड्स में चीट कर सकता है। तो ये भी देखा गया है कि हमें इसलिए हमारे पास, जिसके भी पास व्हाट्सएप अकाउंट नहीं है, उन्होंने ज्यादा प्रिकॉशन लेना चाहिए। व्हाट्सएप जिसका नहीं है उसने, कि अपना ओटीपी अगर किसी को पूछता है हमें कोई, तो वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। उसके बाद में है कि जैसे भी जॉब फ्रॉड्स है, इंश्योरेंस फ्रॉड्स है, लोन फ्रॉड है, ये अभी सबसे ज्यादा हो रहा है। अभी इस जो फ्रॉड्स है, इस फ्रॉड में ये देखा गया है कि अ, हमें या तो ये ग्रीड लालच दी जाती है कि किस तरीके से आपको जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जीरो डॉक्यूमेंट्स पे आपको लोन दिया जाएगा। नाउ अगर हमारे जब भी हमें किसी को, हमारे पेरेंट्स रहते हैं किसी के, या फिर हमें खुद को भी अगर किसी को कोई लोन लेना है, तो हम जब भी किसी बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले हमें कम से कम 50 डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स का कंप्लीशन होने के बाद ही हमें लोन मिलता है। और यहाँ पे ऑनलाइन ऐसा देखा जाता है कि तुम्हें विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स तुम्हें लाखों रुपए, करोड़ों रुपए ये दिए जाते हैं। तो एक्चुअली ये कुछ होता नहीं है, ऐसा कभी होता नहीं है। ये सब चीटिंग का तरीका है। अभी क्या हो जाएगा कि आपको जैसे वो बोला जाएगा कि आपको लोन मिल रहा है, आपको इतना लोन सैंक्शन हुआ है, 2 लाख 4 लाख, जैसे ही आप उसको कॉल करते हो तो उसको मालूम है कि अभी इसको लोन की जरूरत है, इसको पैसे की जरूरत है। अभी वो 2 लाख 4 लाख रुपए का लोन या फिर 10 लाख का लोन लेने के लिए वो आपको बोलेगा कि नहीं, आप एक काम करो, आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको 2,000 4,000 5,000 रुपए कुछ तो प्राइमरी इसमें पे करना पड़ेगा। वो पे करने के बाद में आपको दूसरा कुछ बताएगा कि आपका वेरिफिकेशन हो चुका है, अब नेक्स्ट स्टेज पे गए हैं आप, तो हमारे जो एरिया मैनेजर है वो आपका वेरिफिकेशन करेंगे, उसके लिए 5,000 रुपए। तो ऐसा करते करते आपका लोन लेना है 2 लाख का, और उसके कभी कभी ये भी देखा गया है कि उससे ज्यादा पैसे भी ऑलरेडी आपके चले गए हैं। अभी जो नाइजीरियन फ्रॉड है सबसे ज्यादा बड़ा है, तो नाइजीरियन फ्रॉड अभी ये चेंज होते रहता है अकॉर्डिंग टू द पीरियड। अभी हम जैसे न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि ऐसे किसी का चीटिंग हुआ है, तो ये लोग को पता है कि साइबर क्रिमिनल्स को, या फिर नाइजीरियन, पहले तो नाइजीरियन फ्रॉड यो नाइजीरियन लोग करते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं, इंडियन लोग भी उसमें काफी सारे आ गए हैं। नॉर्थ ईस्ट के भी लोग हैं और बाकी बहुत सारे लोग हैं अपने इंडिया, महाराष्ट्र के या फिर बाकी दिल्ली के, सभी स्टेट के, गुड़गांव के सभी लोग आजकल पाए गए हैं कि सब लोग इस तरह के क्राइम्स कर रहे हैं। तो नाइजीरियन फ्रॉड में क्या मैक्सिमम देखा गया है कि नाइजीरियन फ्रॉड जो है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि गिफ्ट फ्रॉड। एक होता है गिफ्ट फ्रॉड, दूसरा होता है मैट्रिमोनियल फ्रॉड, और तीसरा होता है कि हनी ट्रैप्स। अभी मैट्रिमोनियल फ्रॉड्स क्या है? मैट्रिमोनियल फ्रॉड्स में ये या तो उसके बहुत सारे, थोड़ा थोड़ा चेंज होकर बहुत सारे टाइप्स होते हैं, कि आपको या तो किसी को फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट आ जाएगा फेसबुक पे, या फिर किसी और तरीके से, जैसे आप उसको लाइक करते हो या एक्सेप्ट करते हो, उसके बाद में आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, और आपको धीरे 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 वो मैरिज तक लेके जाएगा, और बोलेगा कि आपको, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। जैसे आप राजी होते हो तो शादी करने के लिए फिर आपका आपके पेरेंट्स को मिलने आएगा, या फिर ऐसा कुछ बोलेगा सिर्फ कि मैं आपके पेरेंट्स को मिलना चाहता हूँ वगैरह। लेकिन इसके बीच में क्या होता है कि वो बोलता है कि अभी ये यहाँ तक तो सब सेम है, या तो आपको किस तरीके से पहचान होना है आपके साथ, वो एक किसी भी तरीके से हो तो भी चलेगा। आइदर ही विल बी एक्वेंटेड विथ यू थ्रू फेसबुक या फिर थ्रू मैट्रिमोनियल साइट्स। मैट्रिमोनियल साइट्स पे भी आप लोग, काफी सारे लोगों का प्रोफाइल होता है कि कोई अगर किसका, जिस लड़के को या लड़की को लगता है कि मुझे मेरे अनुसार लड़का या लड़की मिलनी चाहिए, ये लोग मैट्रिमोनियल साइट्स पे अपना जाते हैं, या फिर वो खुद उनका अकाउंट ये करते हैं, उस पे शेयर करते हैं उनका। तो उसके उसमें क्या होता है कि जैसे ही आप मैट्रिमोनियल साइट पे खुद का प्रोफाइल अपलोड करते हो, आपको किस तरीके का लड़का चाहिए, किस तरीके की लड़की चाहिए, तो उनको ये सब पता है कि किस तरीके से आपको लड़का चाहिए। तो वो क्या करते हैं कि वो एक डिजाइन करते हैं, मतलब टेलर मेड ग्रूम और ब्राइड काइंड ऑफ। तो उसमें क्या होता है कि आपको, अगर आप बोलते हैं कि मुझे यूके में काम करने वाला बंदा चाहिए, आईटी में काम करने वाला बंदा चाहिए, वो खुद को बताएगा कि मैं यूके में काम करता हूँ, मैं आईटी में काम करता हूँ, मेरे पास मर्सिडीज है, ये है, बेंगलो है। तो उससे क्या होता है कि कोई भी लड़की है या लड़का है तो उसको विक्टिम हो जाता है। विक्टिम होने के बाद में जैसे ही आप एक बार उसके ट्रैप में फंस गए,
तो ट्रैप में फंसने के बाद में उस ये सिंपल सी ट्रिक होती है कि उसमें वो बोलता है कि या तो मैं आपको कोई गिफ्ट भेज रहा हूँ, या फिर मैं आपको, मेरा कोई पैसा आने वाला है, मैं गवर्नमेंट से, मुझे कोई लॉटरी मिली है, तो वो पैसा ट्रांसफर करने के लिए मुझे किसी अकाउंट की जरूरत है। तो ये सब हमें होता है सिर्फ आपको बताने के लिए, लेकिन एक्चुअली जब देखा जाता है तो ऐसी किसी तरह का कोई आगम पैसा ही नहीं होता है। कोई जो गिफ्ट होता है, वो जो गिफ्ट आपको भेजा जाता है वो कस्टम में अटक जाता है, या फिर कोई जो पैसा है जो किसी जर्मनी के थ्रू, जर्मनी में है वही पैसा, वहां से वो यूके में जाना है, यूके से फिर आपके पास आना है। ऐसा ये जो लिंक बताते हैं या ये जो चेन बताते हैं कि इस तरीके से ट्रांजैक्शन होने वाला है, इस ट्रांजैक्शन के बहाने वो आपको पैसे निकालते रहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि एक लेडी थी, उसको इसी तरीके का मैट्रिमोनियल फ्रॉड था। मैट्रिमोनियल में उसको किसी यूके के बंदे के साथ उसका फ्रेंडशिप हो गया, उसके साथ शादी करना चाहती थी वो लेडी। उसका एज 65 था। 65 ईयर्स की लेडी को ये पता ही नहीं चला, उसको ये लगा ही नहीं कि मुझे भी कोई चाह सकता है। लेकिन उसको एक दिन फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट आ गया हैंडसम बंदे का, और उस हैंडसम बंदे ने बताया कि आई वांट टू मैरी यू। तो के बहाने, मैरिज के बहाने उसने उसके साथ फ्रेंडशिप बढ़ा ली। उसके बाद में उसने बोला कि मैं आपको मिलने आना चाहता हूँ, तो फिर इंडिया में भी आ गया। जैसे वो इंडिया में आ गया तो उसका वो नेक्स्ट डे उसको कॉल आ गया कि मुझे कस्टम वालों ने पकड़ा है, और मैं अभी कस्टम ने मुझे पकड़ा है, मेरे पास कुछ सामान था जो ऑब्जेक्शनेबल था, जो मुझे कस्टम वाले तुम्हारे इंडिया में आने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं, और मैं दिल्ली से वापस जा रहा हूँ। जैसे वो दिल्ली से वापस गया, दूसरे दिन इस लेडी को किसी हिंदी बोलने वाले कस्टम ऑफिसर का फोन आ गया। उसने बोला कि मैडम आपका जो कोई हार्ले बेंसन था, वो हार्ले बेंसन ने आपके लिए कोई गिफ्ट पार्सल छोड़ा है। तो गिफ्ट पार्सल में 1 मिलियन पाउंड्स है। अभी 1 मिलियन पाउंड मीन्स अराउंड 9 करोड़ रुपीज, और उसके साथ बाकी सारे ज्वेलरी भी है, गोल्ड भी है, और कुछ है, लैपटॉप्स है। तो वो सब आपके लिए वो गिफ्ट छोड़ के गया है। तो आपको जो गिफ्ट है, आपका गिफ्ट पार्सल है, वो कस्टम में अटका है। तो आपको कस्टम वालों को डील करना पड़ेगा, कस्टम को चार्जेज पे करना पड़ेगा। जैसे आप पे करते हैं तो आपको आपका गिफ्ट मिल जाएगा। तो वो लेडी ने वो गिफ्ट पाने के लिए 95 लाख रुपए स्पेंड किए, जो गिफ्ट देखा नहीं है, जिसके सिर्फ फोटोज आ रहे हैं। अभी मैं ये चीज आपको कैसे दिखा बोल सकता हूँ कि सपोज आई एम सेंडिंग यू सम गिफ्ट। अभी मुझे आपको कोई डायमंड की रिंग भेजना है, कोई नेकलेस भेजना है, कोई लैपटॉप भेजना है, तो मैं इंटरनेट पे चला जाता हूँ। वहां पे मुझे कोई भी मैं टाइप करता हूँ सपोज कि मुझे डायमंड रिंग चाहिए, तो डायमंड रिंग के मुझे 1000 फोटो आ जाएंगे। उसमें से कोई भी एक फोटो मुझे पिक करना है, और आपको साथ शेयर करना है कि मैं ये रिंग आपको भेज रहा हूँ। एक्चुअली ऐसा कुछ है ही नहीं। उस गिफ्ट कोई आता नहीं है, कोई बंदा भी नहीं है, ये सब एक रैकेट है, ये सब कॉन्स्पिरेसी का एक पार्ट है। ये सभी लोगों का एक सिंडिकेट है। तो ये सिंडिकेट बना के ये लोग आपको चीट कर रहे हैं। ये जो हिंदी बोलने वाली लड़की है वो भी इंडियन है। वो बता रही है कि मैं कस्टम ऑफिसर हूँ, या फिर कस्टमर मतलब मैं किसी और डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ। तो इस तरीके से बोल के वो हर बार उसको पैसे डालने के लिए अलग अलग बहाने से उसको प्रोव करते हैं उनको। अब ये लड़की को क्या बताया गया कि कस्टम वाला, वो उसको कस्टम चार्जेस 3 लाख रुपए भरना है, उसने 3 लाख रुपए भर दिए। फिर उसने बोला कि नहीं, अभी इसमें नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट लगता है कि इसमें कोई ड्रग्स नहीं है, उसको 2 लाख रुपए पे करना है वो सर्टिफिकेशन के लिए। उसका 2 लाख रुपए पे कर दिया। उसके बाद में फिर बोला कि ये जो पार्सल था उसमें कुछ गोल्ड भी है, तो गोल्ड के लिए आपको कस्टम ड्यूटी फिर से भरना पड़ेगा। वो भरा। फिर बोला कि इसमें पाउंड्स थे, पाउंड्स टू इंडियन रुपीज के लिए एक्सचेंज रेट होता है, तो एक्सचेंज रेट के लिए आपको पैसा भरना पड़ेगा। तो ये सब करते करते वो लेडी ने 58 ट्रांजेक्शन के थ्रू 95 लाख रुपीज पे किए थे। अब ये एग्जांपल सिर्फ ये एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया आपको, ऐसे रोज हजारों एग्जांपल्स हो रहे हैं, रोज चीटिंग हो रहे हैं। और इसके लिए कोई, वो जो लेडी थी वो शी वाज स्कूल टीचर, रिटायर्ड स्कूल टीचर, और उसको ये सब पता है, वो रोज न्यूज़पेपर्स पढ़ रही है। लेकिन उसको पता ही नहीं है कि सच में ऐसा कुछ मेरे साथ भी हो सकता है। मतलब हम जितने भी लोग इंटरनेट यूज करते हैं, ये सब हम लोग सब उस फर्ज पर है कि हम कभी भी उसके लिए विक्टिम हो सकते हैं। तो अभी इसमें भी क्या है, हमें क्या सोचना चाहिए कि मैंने सबसे पहले बताया था आपको कि व्हाई नाम का एक क्वेश्चन है, कि व्हाई हमें हमेशा आना चाहिए, कि मैं क्यों, व्हाई मी। इतना सिंपल क्वेश्चन है कि अभी वो जो यूके का बंदा था, उसको ये पूरे यूके में कोई लेडी नहीं मिली कि जो उसको आप ही पसंद आ गए। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि 65 ईयर्स की लेडी का, उसको जिसने प्रोफाइल खुद का फोटो डाल रखा है, तो उसको वो हैंडसम बंदा उसको पसंद कर रहा है। ये मतलब वाई मी, फिर से वो सवाल हमारे दिमाग में आना चाहिए कि मुझे क्यों पसंद कर रहा है। तो ये सब सवाल अब हमारे पास हमें आएंगे, तो हम इससे बच सकते हैं। तो इसी तरीके से अभी मैट्रिमोनियल फ्रॉड के साथ में उसको थोड़ा चेंज करके
दूसरा फ्रॉड आ सकता है कि समझो आपके पास कोई बिजनेस के लिए ऑफर आ जाएगा कि आपको बोला जाएगा कि मैं बिजनेस को आपके साथ करना चाहता हूँ। अब बिजनेस का भी वही है, सेम है, बस थोड़ा थोड़ा चेंज करके ये सब चीजें होती है। बिजनेस के लिए बोला जाएगा कि मैं यूके में रहता हूँ, मेरी कंपनी आपके इंडिया से कोई चीज इंपोर्ट करती है। तो अभी कोई इंपोर्ट क्या करेगा, कोई सीड्स है जो कैंसर पे काम करता है, कोई तेल है, ऑयल है। अभी ऑयल, अभी सिंपल ऑयल, हम जो भी ऑयल यूज करते हैं तो ये ऑयल नहीं होता है। ऐसा बोला जाता है कि वो किसी घोड़े की स्किन से निकाला जाएगा या फिर किसी और की चीज से निकाला जाएगा। तो ये ऑयल बहुत ही ज्यादा रेयर एंड ये है कि वो मिलता नहीं कहीं पर, और वो सिर्फ इंडिया में तैयार होता है। उसका कोई फॉर्मूला है, वो फॉर्मूले के बाद ही वो बनता है। कोई सीड्स है, वो इंडिया में कोई ऐसा नाम बताया जाएगा, बस्तर या कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट, जमतारा डिस्ट्रिक्ट, मैं जानबूझ के जमतारा बता रहा हूँ, जमतारा ध्यान में रखिए, तो जमतारा डिस्ट्रिक्ट है, तो इसे यहीं पर मिलता है। तो ये सीड जो है, ये सीड के बहाने आपके साथ बिजनेस किया जाएगा कि ये सीड हमें चाहिए। अब इस सीड का कोई भी रेट है, वो सीड मतलब 1 लाख रुपए केजी या फिर 10 लाख रुपए केजी, वो आप फिर जमा करो और हमें भेज दो। एक कंसाइनमेंट आपके साथ क्लियर भी किया जाएगा। वो कंसाइनमेंट क्लियर होने के बाद में आपको लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपको थोड़ा ग्रीड दिया जाएगा। आपको लगेगा कि यार 1 लाख रुपए का मैंने जो खरीदी किया था ये सीड, और ये बंदा आया और उसने 5 लाख 10 लाख रुपए में ये लेके चला गया, तो आपका एक दिन में प्रॉफिट होगा 5 लाख रुपए। तो इसको, इनको मालूम है कि किस तरीके से आपको ग्रीडी बनाना है। और फिर नेक्स्ट टाइम आप जब 1 लाख रुपए का लेने के बाद आप 10 लाख का लेंगे, मतलब उनका तो अमाउंट पूरा रिकवर हो गया है। उसके बाद में नेक्स्ट वो बोलेंगे कि नहीं अभी तो मेरा बंदा आ नहीं रहा है, चीज स्टक फ्रॉम समवेयर। तो ये आप एक काम करो कि मैं बड़ा कंसाइनमेंट आपको डील करता हूँ, आप एक और 50 किलो ले लो। तो 50 किलो के लिए फिर से आपको 25 लाख डालना पड़ेगा। और वो सब जो सीड्स जो रास्ते में कहीं पर भी मिलते हैं, जिसका कोई यूज नहीं है, वो सीड 50 लाख रुपए में लेके आप घर पे बैठे रहते हैं। या फिर वो ऑयल, वो भी आप घर पे लेके बैठे रहते हैं। ये सब नाइजीरियन फ्रॉड्स थे। ये नए मतलब नया कुछ रूप लेके आपके सामने चेंज होकर थोड़ा थोड़ा आपके सामने आते रहते हैं। अभी और एक बात इसमें ये भी देखी गई थी कि बीच में एक फ्रॉड आया था जिसमें ये देखा गया कि जो व्हाइट पेपर रहता है, व्हाइट पेपर्स को डॉलर्स या पाउंड्स बनाया जाता है। अब ये कैसे होता है, वो आता है आप उसके पास, उसके बैग रहती है, कोई लिक्विड रहता है आपके पास, वो सामने आएगा, आपको वीडियो निकालने के लिए बोलेगा, आप वीडियो उसका कर लो, कुछ भी कर लो आप जो करना है। उसके बैग में का वो पेपर निकालेगा और उसके ऊपर कोई उसके पास जो लिक्विड है वो लिक्विड लगाएगा। जैसे वो लिक्विड लगाएगा, दैट व्हाइट पेपर विल बी कन्वर्टेड टू डॉलर्स और पाउंड। वो आपके पास वो पाउंड दे देगा, ही विल हैंड ओवर टू यू, यू गो टू एनी एक्सचेंज और वहां से आप पैसे चेंज करके लाओ, आपको जितना पाउंड का रेट है उतना आपको पैसा मिलेगा। तो आपको फिर से ये हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यार नहीं, व्हाट ही इज डूइंग इज राइट, विद दिस लिक्विड यू कैन कन्वर्ट एनी व्हाइट पेपर इनटू करेंसी। लेकिन करेंसी अभी इंडियन करेंसी में नहीं चेंज होता है, वो दैट इज कन्वर्टेड टू ओनली दैट पाउंड और डॉलर और काइंड ऑफ, बिकॉज डॉलर का रेट, पाउंड का रेट अपने इंडियन रुपये से 70 टाइम्स 100 टाइम्स ज्यादा है। तो उसको ये मालूम है कि एक भी पेपर अगर आप लेते हो तो इस एक कागज का भी उसको 70 टाइम्स रुपीज मतलब मिलने वाला है उसको। तो इसमें भी क्या होता है कि ये जो व्हाइट पेपर होता है, एक सिंपल सी, हमें भी हमारे दिमाग में ये चीज आती नहीं है यार, ये चलो ठीक है, यू आर डूइंग इट विद योर व्हाइट पेपर, ओके टेक माय व्हाइट पेपर एंड डू इट विद दिस। इसके ऊपर तुम्हारा लिक्विड लगा दो, और ये लिक्विड लगाने के बाद में अगर वो दैट चेंज टू करेंसी एनीथिंग, पाउंड और डॉलर और समथिंग, तो मैं ये लिक्विड लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी ट्रस्ट हिम ब्लाइंडली। तो ये ट्रस्ट करने के कारण क्या होता है कि उसको ये हमारे पास सवाल आते नहीं है ना कि ये इसका ही पेपर क्यों ले रहा है, हमारा पेपर क्यों नहीं ले रहा है। जिस मोमेंट को वो हमारा पेपर लेके करेगा तो वो उसका वही नो, उसका करेंसी में चेंज होना ही नहीं है उसको, क्योंकि उसके पास जो पेपर है दैट इज कोटेड विद सम लिक्विड विच इज कन्वर्टिंग दैट करेंसी नोट टू व्हाइट पेपर। और ये दूसरी टाइम, सेकंड टाइम व्हाट ही इज अप्लाइंग इज जस्ट रिमूविंग दैट लिक्विड फर्स्टली अप्लाइड। तो ये क्या कर रहे हो कि जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि कोई लिक्विड लगा रहा है, उसके ऊपर से व्हाइट पेपर दिख रहा है, उसके बाद में जैसे वो दूसरा लिक्विड लगाएगा तो इट विल कन्वर्टेड टू ऑटोमेटिकली करेंसी नोट विच वाज प्रीवियसली करेंसी ओनली। मतलब ये जो नोट था वो दैट इज ओरिजिनल नोट, दैट इज नोट ऑफ पाउंड और डॉलर और काइंड ऑफ। लेकिन वही नोट को उसने पहले व्हाइट पेपर में चेंज कर दिया और आपको बताया कि ये नहीं हो रहा है। अभी हमारे एक दोस्त है, उन्होंने बताया कि ये बंदे ने ये भी उनको बोला कि मेरा पेपर लेके तुम करो। उसने बोला कि नहीं, बोले वो आपके पेपर की क्वालिटी इज नॉट मैचिंग विद दिस पेपर, सो यू नीड द पेपर ऑफ दैट टाइप ऑफ क्वालिटी विच इज ऑफ दैट डॉलर और पाउंड। मतलब वो पेपर भी सेम होना चाहिए। तो हमें ये उसी समय बोलते आना चाहिए कि ऐसा करो कि चलो ठीक है, क्वालिटी भले ही सेम ना हो, लेकिन एटलीस्ट लेट मी अंडरस्टैंड वेदर इट इज कन्वर्टिंग दिस व्हाइट पेपर टू एनी करेंसी और नॉट। तो ये हम लोग बोलते नहीं है। तो इसके कारण, हमारे ग्रीड के कारण, इग्नोरेंस के कारण या स्टुपिडिटी के कारण हम इसमें फंस जाते हैं। अभी सोशल इंजीनियरिंग,
सोशल इंजीनियरिंग भी बहुत ज्यादा अभी ट्रेंड ये हो रहा है। मतलब सोशल इंजीनियरिंग क्या है कि हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो सोशल इंजीनियरिंग के इंफॉर्मेशन के थ्रू आपके पूरी इंफॉर्मेशन वो ले लेते हैं। जैसे अभी मैं आपसे कोई भी किसी स्टूडेंट को बात करूंगा, किसी किसी से भी बात करूंगा मैं, तो उनको पूछूंगा कि आपका नाम क्या है, आपका पेरेंट का नाम क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, तो इजीली वो दिया जाता है, आप कहाँ से आए हो। तो ये दिस इज काइंड ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। तो इसमें मैं आपको कुछ भी पूछता जाऊंगा, आप उसको सवाल जवाब देते जाएंगे, तो मेरे पास डेटा कलेक्ट हो रहा है। तो वट एवर इज ऑन इंटरनेट दैट इज इमॉर्टल। जितना भी इंटरनेट पे डाटा Hello. Hello. कुछ तो मीटिंग का कुछ तो जैसा का क्या नेट प्रॉब्लम आहे की क्या? हाँ बंद आता काय कसं मग इतकं झालं का ते? Lagarde sir. Hello. हाँ madam. Mr. Lagarde, can you hear me? Yes, Yes, please sir. continue. Yes, you please continue. Your voice was stuck. First of all, unmute yourself. Lagarde sir. Yes, Dumala sir. I think Lagarde sir is not audible. He has muted his mic. Some Okay. problem was there, network issue was there, but now he is able to speak. Lagarde sir, please unmute your mic. Now. I have already unmuted, ma'am. Yes, now you're audible. Yes. Right. जैसे ही मैंने अभी मैं बता रहा था कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स, सोशल नेटवर्किंग या सोशल मीडिया, ये हम सब जो ये हमारे वी नो ऑल अबाउट दिस, हम इस टर्म से हम वाकिफ है, हमें ये सब चीजें पता है। इसमें और एक चीज है कि फिशिंग बोला जाता है। कि फिशिंग क्या है? कि फिशिंग इज a criminal fraudulent process of attempting to acquire sensitive information such as username, password, and credit card details by deceptive means in an electronic communication. फिशिंग में और विशिंग में इसमें और एक वीडियो कम्युनिकेशन भी आता है या वीडियो कॉलिंग भी आता है। तो उसमें भी वीडियो कॉल करके आपकी पूरी इंफॉर्मेशन वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये फिशिंग और विशिंग दोनों भी आपको चीटिंग करने के लिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। Online banks or shopping websites are also very common targets of phishing activities. अभी ये सब में क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स हम लोग ज्यादा अवेयर है। हमें पता है कि क्रेडिट कार्ड्स किस तरीके से उनके फ्रॉड्स होते हैं। क्रेडिट कार्ड्स के फ्रॉड्स के बारे में टू टाइप्स है। एक तो हम जो कॉमनली देखा जाता है वो ये है कि ओटीपी शेयरिंग का। हमें बोला जाता है कि आपका जो एक्टिवेशन जो है आपके डेबिट कार्ड का वो बंद हुआ जाए, उसको बंद कर रहे हैं हम। उसको एक्सटेंड करने के लिए हम आपको एक ओटीपी भेजते हैं। ओटीपी आप हमें शेयर कीजिए सो दैट वी कैन एक्सटेंड योर कार्ड वैलिडिटी। तो ये जो है ये बहुत कॉमन टाइप हो चुका है, इसके बारे में हम जानते हैं। लेकिन उसके आगे का है कि स्कीमर, स्कीमर के बारे में काफी सारे लोगों ने पढ़ चुके हैं स्कीमर। लेकिन ये स्कीमर होता क्या है ये भी हम सब लोग इंटरनेट के थ्रू या फिर काफी सारे फ्रॉड्स ओपन चुके हैं इसके थ्रू हमें पता है। लेकिन स्कीमर के अलावा हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमारा जो कार्ड है या फिर कोई भी डिटेल्स है ये किसी के साथ किसी भी हालत में शेयर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि उसका दो टाइप्स होते हैं, एक तो मैन्युअली स्वाइप करने के बाद या फिर ऑनलाइन करने के बाद में हमारा जो भी नाम, क्रेडिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी नंबर, ये जैसे ही हम किसी के साथ शेयर करते हैं या किसी को मिल जाता है तो हमारा जो पूरा भी बैंक अकाउंट का जो ये है बैलेंस है ये सब जा सकता है। तो इससे हमें बचना पड़ेगा। फेक प्रोफाइल ऑन सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। अभी आइडेंटिटी थेफ्ट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग क्राइम इन इंडिया। Every 79 second in India, someone is fall prey to identity theft. लेडी, ये भी कुछ एग्जांपल्स है उसके। एग्जांपल्स तो बहुत सारे हैं, अगर कितने एग्जांपल्स बताएंगे तो इट विल बी डिफिकल्ट टू टेल द एग्जांपल्स। साइबर क्राइम और साइबर एक्ट्स के बारे में तो आपको पता है, तो साइबर एक्ट्स के बारे में मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं।
सिक्योरिटीज के बारे में थोड़ा सा मैं बोलूंगा। इन सिक्योरिटी मैटर्स देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट सिक्योरिटी। अभी सिक्योरिटी मीन्स क्या है कि नोबडी वुड वांट आवर डेटा। ये जो है ये टर्म क्यों आती है, हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमारा डेटा की किसी को जरूरत नहीं है, हमारे डेटा की किसी को जरूरत पड़े ना पड़े। लेकिन क्या होता है कि जो डेटा एक्सट्रैक्शन करने वाली टीम्स जो रहती है, ये जो लोग रहते हैं, ये डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपके हैकिंग कर सकते हैं, आपका मोबाइल हैक कर सकते हैं, आपका कंप्यूटर, इंटरनेट, एनीथिंग दे कैन हैक। और उसके बाद में जो उनका डेटा मिलेगा वो डेटा बेचा जाता है। अगर आप गूगल करके या फिर किसी वेबसाइट पे जाके अगर आप चेक करते हैं कि डेटा फॉर सेल, आपको पूरे उसका डेटा भी मतलब मिल जाएगा। वो सब सेल होता है और वो भी इतना कम रेट में कि 10,000 रुपीज में आपको 2 लाख 3 लाख लोगों का डेटा या मोर देन दैट ऑल्सो, ये सब डेटा आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है। सेकंड ये मिथ है कि हु नोज अस, वी आर एनोनिमस। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि हमें किसी को मतलब ऐसा वो मतलब बोल ही नहीं सकते। इंटरनेट पे अगर हम है तो हमारी आइडेंटिटी कोई नहीं छुप के नहीं रह सकती या हमारी कोई प्राइवेसी नहीं होती है। सबके लिए सब चीजें ओपन है, सबको पता है कि हम लोग क्या चीज देख रहे हैं। शायद आपने ये देखा भी होगा कि जब भी हम वापस आने लगते हैं तो व्हाट इज दिस पॉपअप्स, कोई पीछे काम कर रहा है। सपोज एक बार मैं अगर कोई भी लिंक क्लिक करूंगा या फिर कोई भी कीवर्ड है, सपोज मैं कीवर्ड टाइप करता हूँ साइबर क्राइम। जैसे मैं साइबर क्राइम ये कीवर्ड टाइप करूंगा तो मुझे नेक्स्ट टाइम जब भी मैं इंटरनेट खोलूंगा तो मुझे साइबर क्राइम के बारे में पॉपअप्स आने लगेंगे। अगर समझो मैं अभी कोई भी कीवर्ड है, अगर मैं टाइप करता हूँ कि गोवा डेस्टिनेशन बेस्ट होटल इन गोवा, तो एक बार मैं टाइप करूंगा तो उसके नेक्स्ट काफी सारे दिन तक मुझे वही पॉपअप्स आते रहेंगे कि विच इज गोवा में कौन से बेस्ट डेस्टिनेशन है, गोवा में कौन से बेस्ट होटल्स है, कौन से रिसोर्ट्स है, मतलब ये उसको दिखाया जाएगा। तो ये सब कैसे होता है कि वो कोई उसके पीछे काम कर रहा है, उसके पीछे टीम्स कोई काम कर रही है। ये सब जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज सच ए ब्रांच कि हम हर एक आदमी जो भी काम कर रहा है, अभी वो लाखों करोड़ों यूजर्स है इंटरनेट के, लेकिन उसके थ्रू उसके बाद भी हम अगर कोई भी मेरे दीपक नाम का कोई बंदा अगर कोई गलत वेबसाइट भी अगर चेक करता है तो नेक्स्ट टाइम जो उसको पॉपअप आएगा तो उसी टाइप से आएगा। आप लोग कभी अगर कोई रेसिपी चेक करते हैं खाने की, तो रेसिपी का अगर आप मतलब प्रिपरेशन कोई अगर आप गूगल करते हो, यूट्यूब पे जाते हो, वो चेक करते हो, तो उसके बाद में आगे के जितने भी पॉपअप्स आएंगे आपको वो उसी टाइप के आते जाएंगे, आपको सजेशंस किया जाएगा। तो दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये कैसे काम करता है, उनके पास अपना पूरा डेटा है, उनको ये पूरा मालूम है कि व्हाट आर आवर डे टू डे एक्टिविटीज, हम कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, हम क्या ऑर्डर्स कर रहे हैं। सो देयर इज नो प्राइवेसी एज सच। और एक मिथ है कि देयर इज नो डेंजर टू माय नेटवर्क एट ऑल। अभी ये नहीं है। अभी हो सकता है कि आपके जो नेटवर्क आप यूज कर रहे हैं तो उसको कोई सबसे पहले इसको क्या करना चाहिए कि आपको नेटवर्क के टू टाइप्स है। एक तो आप घर में जो वाईफाई यूज कर रहे हो दैट इज आल्सो कॉल्ड नेटवर्क। एट द सेम टाइम वेर यू आर लॉगिंग, जो वट एवर यू आर यूजिंग साइट्स, जहाँ पर भी आप लॉग इन कर रहे हो, ये सब भी नेटवर्क में आएगा। इसमें भी क्या हो जाएगा कि अगर आपका कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल अगर ठीक से उसके लिए जो एंटीवायरसेस होने चाहिए, प्रॉपर बेस्ट एंटीवायरस, वो अगर नहीं है या फिर अगर वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं है तो फिर से उसमें कोई भी हैकिंग करने के मैक्सिमम चांसेस है, तो जिसके थ्रू आपका पूरा डेटा डेंजर में है। और एक होता है कि हमें काफी सारे लोगों को लगता है कि मैं इंटरनेट पे हुई नहीं तो मैं सेफ हूँ। तो ठीक है, ये कुछ हद तक ठीक है, लेकिन आप सेफ नहीं है, आप थोड़ा सा डेंजर जोन के बाहर है। ये कैसे होता है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा मोबाइल है कि जो इंटरनेट पे कनेक्ट नहीं है या फिर आपका कोई नंबर है जो इंटरनेट पे नहीं है, तो उस समय भी आपको कोई फोन कभी भी आ सकता है। फिर आपका नंबर लेके, मैंने आपको जो आपको बताया था कि व्हाट्सएप भी आपको हैक किया जाएगा या फिर फेक आपका मतलब आपके नंबर से कोई व्हाट्सएप का दूसरा अकाउंट खोल सकता है, उसमें इसका यूज हो जाएगा। आपका नंबर भी अगर किसी को पता है या आपका नंबर भी किसी को मिलता है तो आपका डेबिट कार्ड या जो क्रेडिट कार्ड के क्रेडेंशियल्स है वो उनको मिलने के लिए वो काफी है उनके लिए। तो यू आर नॉट सेफ एनीमोर। अभी और एक चीज है कि हम जो भी इंटरनेट एक्टिविटीज करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आई हैव एंटीवायरस इन माय लैपटॉप सो आई एम सेफ। तो आफ्टर दैट आल्सो आप सेफ नहीं हो, उसके लिए भी आपको बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेने पड़ेगा। एंटीवायरस है इसका मतलब क्या है कि आपके पास स्पैम नहीं आएंगे या फिर कुछ तो ये फायरवॉल्स है।
तो फायरवॉल के कारण आपका कुछ हद तक आपका प्रोटेक्शन हो चुका है, लेकिन फिर भी जैसे ही आप किसी भी लिंक पे क्लिक करना चालू कर देते हो, एक बार आपकी इसमें मैलवेयर एंटी कोई भी चीज आ जाती है, ट्रोजन आ जाता है, तो उसके बाद में आपको ये मतलब योर कंप्यूटर योर डेटा इज नो मोर सेफ। एक मालवेयर ये ट्रोजन के थ्रू आपके पूरा जो कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल्स, इसका पूरा डेटा वो हैक कर सकते हैं। सिर्फ वन ट्रोजन इज सफिशिएंट फॉर दैट। अभी कुछ गाइडलाइंस है जो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है, या फिर ये सभी लोगों के लिए भी होती है। लर्न एवरीथिंग यू कैन अबाउट द इंटरनेट। अभी किसी भी चीज के लिए क्या बोला जाता है कि सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। हम जो इंटरनेट जितना भी यूज कर रहे हैं, तो उस समय हमें ये हर बार ये देखना चाहिए कि क्या नए साइबर ट्रेंड्स हैं, क्या नए साइबर क्राइम हो रहा है। इफ यू टाइप जस्ट साइबर क्राइम ऑन गूगल, ही विल गिव यू थाउजेंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसके थ्रू आपको क्या मालूम पड़ेगा कि व्हाट आर इमर्जिंग ट्रेंड्स, नए नए क्राइम्स क्या हो रहे हैं, ये सब तो मालूम पड़ेगा ही। लेकिन उसके साथ आप ये भी टाइप करके देख सकते हो, तो हाउ टू टेक प्रिकॉशन ऑफ योर इंटरनेट, ये अगर टाइप करेंगे तो आपको पूरा प्रिकॉशनरी मेजर मिल जाएगा। अगर आप टाइप करते हो कि व्हाट इज एग्जैक्टली इंटरनेट, हाउ इट इज हैक्ड, वो भी आपको मालूम पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको सेल्फ लर्निंग होना चाहिए, आपको पूरा उस चीज की जानकारी होनी चाहिए। सपोज यू आर यूजिंग सम यूपीआई ऐप, और यू या फिर कोई भी, अगर आप काफी बार ये देखा गया है कि लोगों को डर लगता है कि मैं ये यूपीआई ऐप है, तो इसके थ्रू अगर मैं ये डाउनलोड करूंगा तो मेरा पूरा पैसा चला जाएगा, कोई भी मुझे लूट सकता है। तो ये हो सकता है, आई एग्री विद दैट। लेकिन इसके लिए आपको क्या जरूरी है कि आपने ये बस करना है कि कोई भी यूपीआई ऐप या फिर कोई भी नेट बैंकिंग, कोई भी चीज आप एक्टिवेट करते हो, तो बस इंटरनेट पे जाओ, उसको चेक करो, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन। तो आपको ये पूरा मालूम पड़ेगा कि आपका क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, आपको किस तरीके से खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए। मैम, कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी, मैम? Yes, sir, you are audible. Yes. Please continue. Second is, ma'am, learn about your students' सर्फिंग हैबिट्स। अब ये सर्फिंग हैबिट्स क्या होता है कि मैंने आपको अभी अभी एक्सप्लेन किया था कि जिस तरीके से हम सर्फिंग कर रहे हैं, उस तरीके से हमको पॉपअप्स आते रहते हैं। हम लोग क्या सर्व कर रहे हैं, ये वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली टीम है, वो सब उसको देख रही है, उसको गवर्न कर रही है। जो यूएसए का इलेक्शन था या फिर इंडिया का भी इलेक्शन था, इसमें भी ये देखा गया है कि हमारे ट्रेंड्स क्या है, हम क्या चीज देख रहे हैं, उस अनुसार हमें पॉपअप्स आते हैं। हमारा माइंड किस तरीके से डाइवर्ट करना चाहिए, ये भी उसमें अभी ये हो रहा है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हमारा पूरा माइंड भी चेंज होता है, ये भी देखा गया है। तो हमें ये इससे बच के ही रहना चाहिए। मेक श्योर दैट मॉनिटर स्क्रीन्स आर विजिबल। सेकंड इज कीप पेरेंट्स इन्फॉर्म्ड। अभी पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन क्या क्या देना चाहिए, अगर हमसे कोई गलती भी होती है, हमें कोई धमकी आती है, कोई थ्रेट्स आते हैं, हमारा ये काम है कि हमारे पेरेंट्स को उसी समय बता दो कि हमारे ये हमसे ये गलती हुई है, सो दैट दे कैन टेक केयर ऑफ इट। अभी सिक्योरिटीज में एक वाईफाई सिक्योरिटी भी होती है। एक तो कॉलेज की वाईफाई सिक्योरिटी होती है, एट द सेम टाइम अपने घर की भी वाईफाई सिक्योरिटी होती है। और एक तीसरी बात है कि आजकल हमारे मोबाइल जो है, ये भी वाईफाई का सेंटर बन सकते हैं। हम भी हमारा वाईफाई या हमारा इंटरनेट किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। ये सभी तीनों चीजों के करते समय ये हमने ये देखना चाहिए कि हमारा जो भी वाईफाई यूज कर रहा है, तो हमें जिसको वाईफाई यूज करने देना है, वही बंदा वाईफाई यूज कर रहा है, नॉट अदर देन हिम। उसके लिए क्या है, या तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होना चाहिए, या फिर एक होता है कि हम रेलवे स्टेशन पे जब जाते हैं, तो हमने देखा है कि रेलवे स्टेशन जाने के बाद हम अगर वहाँ का इंटरनेट एक्सेस करने का कोशिश करते हैं, वहाँ पे हमें एक पिन या पासवर्ड मांगा जाएगा, हमारे मोबाइल पे का ओटीपी आ जाएगा, वो ओटीपी शेयर करने के बाद में ही हमें एक्टिवेशन मिलेगा। तो सेम वे व्हेन कॉलेज इज प्रोवाइडिंग एनी वाईफाई, दैट टाइम कॉलेज इज रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट दिस टाइप ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स। हमारे घर का भी जो होता है, उसमें भी WPA PSK ये सब एक्टिवेट होना चाहिए। मैक्सिमम प्रोटेक्शन, मैक्सिमम डिफिकल्ट पासवर्ड, यही हमें बचाएगा। अदरवाइज क्या होता है कि हमारे पास अगर ओपन वाईफाई हमने अगर दिया है, या किसी फ्रेंड के साथ शेयर किया है, तो वो कोई भी आके शेयर करके उससे कोई गलत भी काम कर सकता है। लेकिन फिर हम पुलिस को भी ये, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर पुलिस ऑल्सो टू ट्रेस दैट टाइम। सेकंडली होता है कि चेंज द वेब एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड। हमारा जो पासवर्ड है वो हमेशा 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद चेंज करते रहना चाहिए।
प्लेस द राउटर इन अ फिजिकल सिक्योर प्लेस। राउटर के साथ कोई छिड़खानी ना करे, इसलिए वो ऐसी जगह पे होना चाहिए कि वो किसी के इजीली एक्सेस में नहीं होना चाहिए। टर्न ऑफ फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग, उसके थ्रू भी कोई आपके इंटरनेट या एक्सेस कर सकता है। मेंटेन लॉग्स फॉर क्लाइंट साइड आईपी एड्रेस। अब ये मेंटेन लॉग्स क्या होता है कि काफी बार हम ये देखते हैं कि जब भी कोई इंस्टीट्यूशन है बड़ा, कोई कंपनी है बड़ी, अब सपोज कोई कॉलेज है, कॉलेज का इंटरनेट काफी सारे लोग एक्टिव मतलब यूज कर रहे हैं, उस समय कौन सा बंदा कौन सा कंप्यूटर यूज कर रहा है या फिर कहाँ से वो एक्सेस कर रहा है, ये अगर पता ना हो तो कोई गलत एक्टिविटी जब वो करेगा तो किसी के पकड़ में नहीं आएगा। तो इसके लिए अगर कॉलेज कोई उसका कॉल लॉग अगर मेंटेन करता है, उसका लॉग अगर मेंटेन करता है, कंपनी में हम मैक्सिमम टाइम से उनको बता दिया है, अभी तो सभी कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने भी ये करना चाहिए कि उसका लॉग मेंटेन करना चाहिए। उसके कारण ही हम उस जिसने वो कंप्यूटर यूज किया है या जो भी अगर इंटरनेट यूज कर रहा है, वाईफाई यूज कर रहा है, उस तक पहुंचने के लिए काफी वो इजी हो जाता है। अपग्रेड टू द लेटेस्ट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। डू नॉट यूज पायरेटेड सॉफ्टवेयर। हमारी जो सिस्टम्स है उसमें भी अगर कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर है तो वो भी हमें एक हैकर को एक चांस देता है कि वो हैक कर सके और हमारा डेटा ये कर सके। अभी स्टूडेंट के लिए और एक ये है कुछ टिप्स है उनके लिए भी, तो भी मैं फिर से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अंडरस्टैंड व्हाट यू पुट ऑनलाइन विल बी देयर फॉर एवर। मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि 10 साल पहले भी अगर आपने कोई भी चीज अपलोड किया है तो वहीं पर है, दैट डेटा इज फॉर एवर देयर, दैट इज नॉट गोइंग टू बी इरेज्ड। हमें अगर किसी को लगता है कि मैंने वो डेटा निकाल दिया है, लेकिन वैसा नहीं होता है, हमने डिलीट किया तो भी वो वहीं पर है। डोंट पोस्ट इनअप्रोप्रिएट और इलीगल कंटेंट एनीवेयर ऑन द इंटरनेट। अभी हम कोई भी पोस्ट या कोई भी कंटेंट इंटरनेट पे डालते हैं तो मैंने बोला कि वो वहीं पे रहने वाला है, तो उसमें अगर कोई इनअप्रोप्रिएट है, इलीगल है, तो वो भी वहीं पे रहने वाला है। आप उसको डिलीट भी करेंगे तो भी वो वहीं पे रहने वाला है। तो इसलिए आप उसको शेयर ना करें। अगर उसने आपको किसी के साथ आपने शेयर किया है तो वो कहीं वहीं वहीं पर रहेगा और हम उसको कर सकते हैं कभी भी। यूज अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अभी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप सब लोग यूज कर रहे हैं, ऐसा मुझे मतलब अभी जब भी मेरे बच्चे भी हैं तो ये जो इंटरनेट यूज करते हैं, उनका मोबाइल यूज करते हैं, तो द वे दे आर यूजिंग देयर कंप्यूटर्स एंड मोबाइल, सो दे आर यूजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स which is containing combination of upper and lower case letters, symbols, numbers and all that. So I hope that you are also you all are also using the same way. Don't open email attachments or instant message attachment unless you are completely sure they do not contain viruses. अभी सबसे पहले मैंने आपको एक बताया था कि कोई भी चीज आती है, कोई भी लिंक्स आपके मोबाइल पे या फिर इंटरनेट पे मेल पे आ जाते हैं, आपको बोला जाता है कि दिस थिंग इज फ्री, या फिर यू आर गेटिंग सम मोबाइल और सम शू और समथिंग ऑन इन अमेजोन सेल, फ्लिपकार्ट सेल या किसी सेल के ऊपर आपको कोई चीज बहुत सस्ते में मिल रही है, तो ये जो लिंक्स है ये आपको किसी भी हालत में क्लिक नहीं करना है, या उसके साथ भी अगर कोई अटैचमेंट आती है वो भी आपको क्लिक नहीं करना है। एक सादा सिंपल जो फोटो भी रहता है, अगर मॉर्निंग के जो मैसेज हम फॉरवर्ड करते हैं डे टू डे, तो उस मैसेज के पीछे भी कोई भी इनक्रिप्टेड डेटा रह सकता है, दैट कैन बी अ ट्रोजन और मालवेयर which can corrupt your mobile, laptop or can hack your data also. Never agree to meet a fellow chatter in a real life. अभी इसमें क्या होता है कि हम जो भी वेबसाइट यूज कर रहे हैं, जैसे सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट लाइक तो बहुत सारी, अभी तो इतने ज्यादा है, फेसबुक तो बहुत कॉमन हो गया है, लेकिन वो सभी के लिए जितना भी हम यूज कर रहे हैं उस सब के लिए एक सिंपल सी आपको मैं बता देता हूँ कि सपोज अभी मेरा भी अगर आप फेसबुक प्रोफाइल चेक करेंगे तो मेरे फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर जिसका भी अगर प्रोफाइल पिक लगा है, पिक्चर लगा है, तो जरूरी नहीं कि वो मेरा हो। तो इसलिए ये बोला जाता है कि जो भी अगर आप जिसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिसको आप मिल रहे हैं या फिर कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो बंदा आपके पहचान का होना चाहिए, वो आपको दिखना चाहिए। फिर प्रोफाइल के ऊपर का उसका डीपी देख के ये मैं उसके साथ कम्युनिकेशन करना नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। रिपोर्ट एनी ऑनलाइन कंटेंट और एक्टिविटी दैट यू सस्पेक्ट इज इलीगल। जितने भी इलीगल एक्टिविटीज हमें लगता है, अभी हमें कभी बार लगता है कि हमारा कोई इलीगल मैसेज आया है या कोई गलत मैसेज आया है, तो ये मैसेज भी आता है, कोई भी लिंक आती है, कोई भी आता है, तो ये हमें छुपा के नहीं रखना है, या फिर उसको इग्नोर किया तो भी ठीक है,
लिए अगर इफ यू ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ साइबर सेल और साइबर पुलिस स्टेशन, दैट विल बी यूजफुल। हम उसका भी डेटा कलेक्शन हमारा भी होता है कि कौन से नंबर्स आजकल साइबर क्रिमिनल्स यूज कर रहे हैं, तो वो जो नंबर्स है, वो जो लिंक्स है, उसके थ्रू जो भी हैकिंग हो रहा है या जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही है, वो हम उसको ट्रेस कर सकते हैं। सो प्लीज शेयर एनीथिंग दैट यू सस्पेक्ट इलीगल टू द साइबर सेल और साइबर पुलिस। अभी वन मोर थिंग इज ओनली गिव योर मोबाइल नंबर आउट टू द पीपल यू नो एंड ट्रस्ट। मोबाइल नंबर, योर मोबाइल नंबर, आजकल क्या हो रहा है कि मोबाइल नंबर इज द बिगेस्ट थिंग, योर एवरीथिंग इज लिंक्ड विथ मोबाइल नंबर, योर आधार कार्ड, योर मोबाइल बैंक, एवरीथिंग। इसके बाद में अभी जो भी फ्यूचर आने वाला है, अगर हम देखेंगे तो हमारा पूरा मैक्सिमम बच्चे भी अभी करते हैं कि हमारा रिचार्ज, इलेक्ट्रिक बिल, जितने भी बिल्स है हम सब मोबाइल के थ्रू भरते हैं, तो मोबाइल नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी है कि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होते हैं कि हमारा मोबाइल को हम स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे के रखते हैं कि इस तारीख को इतना इलेक्ट्रिक बिल पे करना है। इलेक्ट्रिक बिल जनरेट हो जाएगा, जैसे हमें मैसेज आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली दैट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम आवर अकाउंट। तो ये मोबाइल के थ्रू पूरा होता है। तो मोबाइल नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो डोंट शेयर यू एनीवन। डोंट रिसीव और रिप्लाई टू कॉल्स फ्रॉम इंटरनेशनल कोड, दैट इज +92 और 0092। अभी ये +92 एंड 0092, ये इसमें से मैक्सिमम जो कॉल्स है ये देखा गया है कि फ्रॉडस्टर कॉल्स है ये। तो इफ anyone is calling you from these numbers or from this international code, please do not accept this, do not reply this. अभी और एक बात बताना चाहता हूँ मैं आपको कि हाउ टू डिफर बिटवीन एनी वेबसाइट विच इज वेदर इट इज फेक और नॉट, हाउ टू आइडेंटिफाई इट। कोई भी चीज हम अगर देखना चाहते हैं, कोई भी हमें एक लिंक आता है कि सपोज अमेजॉन प्राइम या अमेजॉन हमें कोई फ्री में गिफ्ट दे रहा है, तो क्या करना है कि डू नॉट क्लिक ऑन द लिंक, ऑन द कॉन्ट्ररी यू जस्ट कॉपी द लिंक, पेस्ट इट ऑन गूगल एंड चेक वेदर देयर इज HTTPS और नॉट। HTTPS टाइप करने के बाद में ये सिक्योर्ड, HTTPS तो कोई भी अगर टाइप करेंगे आप तो HTTPS के बाद में कोई भी लिंक ओपन करते तो ओपन हो जाती है, लेकिन you yourself type HTTPS, then paste the link, and after that open the link. If that link can be opened with the HTTPS, then that is the secure or safe link. That can be genuine link, not 100%, but that can be a genuine link. So use that link only. और दूसरी बात है कि कोई भी सिक्योर लिंक है तो वहां पे हम जहाँ पर स्क्रॉल बार होता है, जहाँ पर कोई भी हम चीज सर्च कर सकते हैं, तो सर्च ऑप्शन में वहां पर एक लॉक भी दिखता है हमें, तो लॉक का मतलब है कि दैट इज सिक्योर्ड वन। Do not use your mobile phone to communicate with strangers. Only text and call people or business you know in real life. हमें ये भी प्रिकॉशन वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो मोबाइल कम्युनिकेशन है वो भी किसी स्ट्रेंजर के साथ नहीं करना है। किसी का अगर आपको फोन भी आता है तो अननोन कॉल्स, अनवांटेड कॉल्स को रिप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। डू नॉट टर्न ऑन ब्लूटूथ इफ इट इज नॉट इन यूज। जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स काफी लोग बच्चे ब्लूटूथ भी ओपन करके रखते हैं, तो वो नहीं करना है आपको। Do not allow others to take pictures or videos of you without your permission. Remember, these pictures and videos can be posted to the internet. अभी मैक्सिमम टाइम्स ये देखा गया है कि जितने भी हमारे फोटोज है इंटरनेट पे है, तो वो सब ये हैकर्स के पास है। अगर मेरा भी कोई फोटो है तो उसको मॉर्फ करना, मॉर्फिंग तो सब लोग जानते हैं, तो मॉर्फिंग करने के बाद में वो फोटो मुझे भेजना या फिर मेरे किसी फ्रेंड्स को भेजना और मुझे एक्सट्रैक्शन करना, ये तो बहुत कॉमन चीज है। तो इसलिए हमारे कोई फोटोज भी अगर इंटरनेट पे ना हो तो अच्छा है। And we should not allow our friends also to take unnecessary pictures. If your phone is lost or stolen, report it to the local police station and your network operators immediately. अभी इसका what is the reason behind this? हमारा मोबाइल गुम हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा 10,000 रुपए का या 5,000 रुपए का लॉस हुआ है, बट बियॉन्ड दैट मोबाइल कैन बी यूज्ड बाय दिस हैकर। ये बहुत बड़ी बात है। या फिर साइबर क्रिमिनल्स, तो उससे क्या होगा कि साइबर क्रिमिनल अगर आपका कोई मोबाइल यूज करता है तो जब भी वो पकड़े जाएंगे तो पुलिस आपके पास पहुंचने वाली है कि वो मोबाइल आपका था। तो अगर आपका मोबाइल कोई लॉस्ट होता है या कोई चोरी होता है तो प्लीज रिपोर्ट इट टू द कंसर्न पुलिस स्टेशन। इन सिक्योरिटी मैटर देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट सिक्योरिटी। ये तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि किस तरीके से ये एब्सोल्यूट सिक्योरिटी नहीं है। अभी लास्ट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रजिस्टर में impersonate as government reputed organization regarding the registration for COVID vaccine over phone call, social media, or by sending fake text messages, email containing phishing links
be vigilant and aware, especially in case of registration of for COVID vaccines. तो ऐसे ही अभी क्या देखा गया है कि पंतप्रधान रोजगार योजना, पंतप्रधान लोन योजना, ऐसे किसी भी गवर्नमेंट के लोन के योजना के नीचे ऑन द वेयर ऑफ दैट, ऑन द कर्टन ऑफ दैट, ये फ्रॉड्स हो रहे हैं. तो वी शुड बी अवेयर ऑफ दैट आल्सो. So take maximum precautions. There is no privacy as such. Be careful and all the best to all. Thank you, ma'am. Thank you very much, Mr. Lagarde. It was very insightful, and you have very recent examples also. So please be with us for a few minutes. And now I am handing over mic to Professor G.V. Tumale sir to propose a vote of thanks before concluding the program. Sir, over to you. Yes, Lagarde sir, namaskar. Principal बोलता हूँ रेड्डी sir. After a long time, I am seeing you on so online virtually. I am seeing you. So बहुत दिवस हो गए आपसे मुलाकात को. When you are there in Belgaum, by that time we were meeting in the library. So I don't forget you. So in spite of your busy schedule, so being a police officer, you have spent for this academic seminars, webinars, and you have contributed. So you have spent much time for us. I am very much thankful to you personally. Thank you, sir. Thank you, sir. Madam, may I audible? Yes, sir. Yes. Thank you. Thank you, Jita madam. Professor Dr. Raman Mittal sir, Mr. Deepak Lagarde sir, respected Principal Dr. B. Yuva Kumar Reddy sir, and all other my colleagues, senior faculty member, coordinator of the IPSC, Dr. E.R. Shirsagar sir, Dr. Vijeta madam, and participants. It is my privilege to have been asked to express or propose the vote of thanks on this occasion. I, on behalf of IPR cell, SS Maniar Law College, and the entire team of Law College, I express on my own behalf of myself, I express and extend very hearty vote of thanks to the today's resource person, Professor Dr. Raman, who has given his valuable time and guided us in details, very informative and interactive sessions. I express deep sense of gratitude towards Dr. Mittal and also our one former students, alumni, Mr. Deepak Lagarde sir, who has guided to us with a very informative and very knowledgeable information, because our today's life is fully flooded with the social media. Social media become our one of the integral part of our life. But same time, there are a lot of threats and lot of issues are there. And you have given detailed knowledge about it. So, sir, I express sincere thanks towards Deepak Lagarde sir. Thank you, sir. Then our beloved principal, Dr. B. Yuva Kumar Reddy sir, who is continuously guiding us and encouraging us to conduct such type of program. So on behalf of my colleague and IPR sir, I express sincere thanks towards Dr. Reddy sir. Thank you, sir. Thank you, sir. And our senior faculty member, D.R. Shirsagar sir, IQS coordinator, is continuously guiding us and he is continuously supporting to conduct such a kind of program. I express thank you, sir, Deepak Shirsagar sir. Our today's coordinator, IPR sir coordinator, Dr. Vijeta Singh madam, who has initiated to call and invite our today's resource person and coordinated this program and cooperated with me. So I express deep sense of gratitude. Thank you, Vijeta madam. Thank you. Thank you. Then all other my colleagues, Dr. Pooja madam, Dr. Yogesh Mahajan sir, Dr. Anjali Bondan madam, and Dr. Amita Varade madam,
and all other faculty members who has cooperated me and supported me. And on behalf of all, I will express thank you to all. And last, uh, our one of the alumni, student, advocate Niranjan Dhake, and Pius. These two people have very much cooperated to me to conduct this program with online. And with their cooperation, I and we are able to conduct this meeting without any interruption. So thank you to the Niranjan and Pius. And at last, without taking everybody's name, I will express deep sense of gratitude. Thank you to all the participants, because within the participants there are many dignitaries. Those, some of them are principal, in charge principal, professor, associate professor, professor, advocate, and the students. I express thanks to all of them, and at last, I once again express thank you to all, and with the permission of principal who has guided and presided this session today. Once again, I express thank you to the Dr. Reddy sir, and with the principal of sir, we will declare that the program is over. Sir, Reddy sir. Thank you, Dumaya sir. Thank you, sir. Once again, thanks, Lagar sir. Sir, before leaving, I want to express my sincere, deep sense of gratitude towards our Dumale sir, respected Dumale sir. Without his cooperation, online platform was not possible. So, sir, a special thanks to you on behalf of me and entire team of SS Maniar Law College. Thank you to all our team. Thank you to all our team. Chisagar sir, unmute first and then say. Both of you are two hands for this intellectual virtual organizing the program. So yes, sir. you have arranged resource persons, you have contacted, you brought them. So timely participation and the technical support as given by technical coordinator Dumale sir. And we have to really appreciate Lagar sir. Why? Because so you know that nowadays, so how much work will be there to the police officers. So that we are witnesses for that. So everywhere, whenever their position is different, particularly during this pandemic period, in such and such circumstances, so he is having some concern towards SS Maniar Law College, and he was student. So he has so just taken part even 5 to 10 minutes is also we should not forget in such and such circumstances he has spent much more time, so he is with us. Sir, we will welcome you on offline, and after getting a good elevation in your positions, so we have to invite you as a special guest, and also whenever so there will be alumni meeting is there, by the time we will invite you so as one of the guest alumni to this institution, sir. Thank you very much. Thank you all. Thank you very much, one and all. Thank you, Lagar sir, Deepak sir. Thank you to all. Special thanks to Reddy sir and Dumale sir and entire my SS Maniar Law College team. Thank you, dear participants. Thank you so much. Thank you, Vijeta madam. Thank you, Reddy Sanaj sir. ma'am. Thank you for Thank you, being with madam. us. Sanat madam. Thank you very much. Sir. Thank you, sir. Thank you, sir. So, with the permission of Chair, respected Yes, Principal, okay. shall I declare the program is over? Yes. Yes. So, this program is over. Thank you for being with us.